Okay, hello everyone. Good evening everyone. I hope सब ठीक है, right? Okay, let me share the screen and we'll discuss what we have done on the last class. Okay, so आज हम practicals पूरा practical करेंगे lab पे and we'll see the packet flow देखेंगे यहाँ पे live में and then we will understand the rest of the theory. और अभी तक हमने जो cover किया है we will come to know what we have done till now. Right, so I will share the screen. Okay, I hope I am audible. Okay, say yes on chat. If you have doubt, query, कुछ doubt है, query है, okay, you can raise your hand. I will come back to you on the same moment. I will stop. Okay, I will stop there and I will answer your question. पहले मैं आपके doubts clear करूँगा. अभी अगर कोई doubts है तो पहले, then we can continue. Yeah. Okay, thank you. All right, let me share the screen. Okay, let me open the PPT. तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर किया था, राइट? सो वी हैव कवर लॉट ऑफ स्टफ देयर कंपेयर टू डिवाइस एक्सेस. कैसे हम डिवाइस एक्सेस मैनेज करेंगे सोफोस फायरवॉल का. ऑलराइट, सो दिस इज द ग्लोबल सेटिंग जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. देन वी हैव लोकल एक्सेप्शन रूल्स, कैसे बिना ग्लोबल सर्विस एनेबल हमें नहीं करना है. एंड we can have the access of, let's say, WAN from outside. Okay, so how we can create local ACL rules, कैसे local ACL rules हम create करेंगे. Okay, these are the ACL rule for the device जो firewall है उसके लिए. Let's say this is the example that you want to access the firewall from outside of your organization. company के बाहर firewall access करना है. All right, so this is the branch office, let's say. So the source network is mentioned is head office public IP. Okay, so जो head office होगा, alright, वही firewall को access कर पाएगा as per this rule. Alright, if you want to access from other location, you have to mention that IP. And हमने discuss किया था that IP should be static IP. Okay, if it is dynamic IP, that तो कोई इसका वैसे यूज ही नहीं है क्योंकि आईपी चेंज हो जाएगा एंड यू माइट हैव टू अपडेट दिस रूल. आपको रूल पे अपडेट करना पड़ेगा, वही आईपी डालना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. राइट, यस. सो लोकल एसीएल क्रिएट करेंगे. देन हमने लास्ट प्रैक्टिकल में एसएसएच पब्लिक की ऑथेंटिकेशन एनेबल किया था फायरवॉल पे टू गेट द सिक्योर एक्सेस ऑफ एसएसएच जो CLI होता है, राइट, थ्रू SSH. वो हमने लिया था पब्लिक की ऑथेंटिकेशन. वी हैव एनेबल्ड इट. तो हमने 3 एप्लीकेशंस डाउनलोड की थी. ऑलराइट, एक तो ऑलरेडी थी, पुट्टी एप्लीकेशन ऑलरेडी लैब पे इंस्टॉल है, बट यू माइट हैव टू इंस्टॉल पुट्टी की जनरेशन एंड पेजेंट एप्लीकेशन. सो वो 2 एप्लीकेशन जो लास्ट वीडियो है वो आप फ्राइडे वाला, यू कैन वॉच दैट वीडियो. वो तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपको. एंड देन यू हैव टू जनरेट द की and then you have to enable the public key authentication on firewall. तो इस हिसाब से आपको एडमिन यूजर जो पासवर्ड है आपको शेयर करने की जरूरत नहीं. पब्लिक की से ही, प्राइवेट की से ही आपका एक्सेस हो जाएगा फायरवॉल. ओके, सो जिस पीसी पे, ओके, जिस एडमिन पीसी पे या फिर जिस पीसी पे आपने आपको एक्सेस देना है एसएसएच का विदाउट शेयरिंग पासवर्ड, एडमिन यूजर पासवर्ड, आप ये फीचर यूज कर सकते हो. ऑलराइट, इट इज अवेलेबल फॉर मेनी ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइस. इट इज नॉट अ बिग डील, yes, but
for a secure feature, we have used this, how it works with Sophos Firewall. So Sophos Firewall में कैसे ये work करेगा, ये हमने देखा था last time, right? So these are the supported algorithms and what we have to set it up. Even though अगर हमें logs देखना है तो log का command क्या था? So it is tail-/log.ssd.logs. Okay, तो हम वो बाद में logs देखेंगे. Right now it is not. जब एडवांस ट्रबल शूट में आएंगे तब हम ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कैसे नेगोशिएशन होता है between the your PC and the firewall, right? So you can find out if there is some issue. वैसे तो issue नहीं आएगा. You can if you regenerate the public key, then it might get resolved, right? You don't have to look into the reports. But if you want to अगर debug पे लाना है, then you can just generate. You can check the logs if you are doing some debugging and testing some features. And then we have discussed about the certificates, right? तो सर्टिफिकेट जो फाउल्स का जो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट है वो हमने हम लैब पे भी यूज करेंगे. ऑलराइट, सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ सर्टिफिकेट वर्क्स, हाउ Sophos यूज मैन इन द मिडल. ऑलराइट, कैसे Sophos एज अ मैन इन द मिडल रहेगा एंड it will use as a proxy server, right? It is your proxy server. So proxy settings भी देखेंगे कैसे कौन सी ब्राउजर पे डालना है. जैसे कोई proxy settings भी डालना पड़ता है, राइट? तब जाके हमें इंटरनेट मिलेगा. And then we can use the access to the internet after adding the proxy IP और port number डालने के बाद ही ब्राउजर पे इंटरनेट मिलेगा. So we will understand what are the difference between the explicit and the transparent proxy. Right now it is transparent, so you don't have to worry. अभी डायरेक्टली हमें ब्राउजर को योर यूजर एंड यूजर्स जो होंगे, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, दे डोंट हैव टू worry about the browser configuration. Okay, they directly will use their web proxy, Sophos as a web proxy. Okay, वो भी हम internal भी देखेंगे later on. What is the internal proxy, how we can redirect the traffic through Sophos Firewall. So we will see the practical today, and whatever we have covered in this module, जो ये module पे किया वो अभी हम पूरा आज practically करेंगे. Alright, so we have DNS, DHCP server, interface configure करेंगे. Alright, and yeah, we will see type of interfaces, lag, alias. Okay, तो bridge mode और lag configure हो जाएगा आज. Alright, and zones, profiles. Alright, and so on. Alright, I will share this PPT right away. Just give a moment. भी शेयर करते हैं अगर हो सकता है तो. Okay, I think I will get the option. Okay, let me just share the screen. Chat पे डालने की ट्राई करते हैं एक बार. If it is getting dropped. I don't think it is getting dropped, but let me find the option. Okay, let's continue. Okay, बाद में share कर देता हूँ, no worries. You will get the lab access as soon as possible if you have not received. Okay, so let me share the screen. With first step is to install. आज एक बार installation भी देख लेते हैं. आपके लैपटॉप पे firewall install कर लो so that you can have the access of the firewall. All right, so you can see the options at least on your VMware. Okay, तो लैपटॉप पे let me share one browser. कैसे करेंगे? All right, so yes, of course, you need to install VMware. आप VMware इंस्टॉल कर लेना वर्कस्टेशन आपके लैपटॉप पे. ऑलराइट, एवरीवन नोस हाउ टू इंस्टॉल वर्कस्टेशन, राइट? Those who doesn't know or if they require help, okay, you can contact me directly. I will take the remote session and I will install it for you, right? But you have to install VMware workstation. All right, once it's installed, you will get the option to install your virtual machines, right? So for Sophos, right, Sophos Firewall free trial. Yeah. Yeah, I will provide my mobile number. Okay, let me just type it right away. It's 0807539339.
Okay, that is my number. Okay, that is for all. You can contact me in case of you having type of issue. I might take the access. All right, so free trial. Let's try it. Sophos XZ free trial, and click on download free trials. Okay, you can click here, the second link. I hope everyone can see my screen. Let me see. Okay. Alright, so sign up for Sophos free trial. तो देखो यहाँ पे आपको सारे फ्री ट्रायल्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो जो भी आपको यूज करना है यू कैन यूज इट. बट ये जो कोर्स है सोफोस फायरवॉल्स है, सो वी विल यूज दिस वन. ऑलराइट, अगर आपको सोफोस इंटरसेप्ट एक्स सर्वर और इस सोफोस सेंट्रल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो तो मैंने आपको फर्स्ट डे पे करवा दिया था. ऑलराइट, बट हम आगे करेंगे और एक बार अकाउंट क्रिएट करेंगे, बट नॉट टुडे, बट maybe in the next class. Okay, well, you can try. Okay, just आपको एक पेज पे ले जाएगा. You have to give your name and some details. ईमेल एड्रेस देना है, आपके कंपनी का ईमेल एड्रेस डालना है. ऑलराइट, नोट द जीमेल, एंड वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट, बट हम बाद में क्रिएट करेंगे. सो इफ यू वांट टू यूज दिस फ्री प्रोडक्ट यू कैन यूज इट लेटर ऑन. ऑलराइट, स्क्रॉल डाउन एंड देखो कौन कौन से लिस्ट में है. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द फायरवॉल. क्लिक ऑन फ्री फॉर द फ्री. ऑलराइट, तो अगेन ये भी जैसे सोफोस सेंट्रल पूछेगा वैसे ही आपको फायरवॉल भी पूछेगा. सेम स्टेप्स ये. ऑलराइट, सो सोफोस. ओके, सो ये सोफोस के बारे में है थोड़ा. ऑलराइट, सो जस्ट गिव योर नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, क्लिक ऑन सबमिट. ऑलराइट, एंड click on terms and condition. All right, so click on submit. Okay, let me just control shift delete. Let me clear everything. Suppose XZ free trial. All right, so suppose XZ free trial करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, let's click here. Okay, so yeah, now you get the Sophos Firewall free. Click on free trial. Okay, let's give the name. Okay, and the mail address. Okay, give the companies. If you have, don't use the Gmail. कितना possible हो सके इतना, नहीं तो शायद नहीं होगा. Okay, click on next. And उसके बाद next click करोगे तो job role आएगा. Okay, so you can click any. Okay, you can use home student is fine. Okay, give number, your number. Okay, okay, और company का नाम दे दो. All right, so it's done. Now once you give the company name, okay, industry जो भी है, okay, you can select. I will select others. Company size I will select, let me put it 10 as of now. It's fine, कुछ भी random दे सकते हैं. And select India, and state, you can select your state and click on the terms and condition. Click on submit. जैसे सबमिट करोगे it will redirect to the thank you page. Okay, you can check the serial number. Okay, जो आपका serial number होगा वो आपको मेल में मिल जाएगा. Okay, you don't require the serial number. Okay, but scroll down और देखो यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उस पे कहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. यू विल गेट इट फ्रॉम हियर. सो वी हैव VMware, Hyper-V, KVM. ओके, Nutanix सर्वर भी है. आई थिंक दे हैव नॉट अपडेटेड. ओके, तो जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे से यहाँ पे मिल ही जाएगा. सो VMware है सबसे पहला. सो क्लिक ऑन डाउनलोड. तो जैसे डाउनलोड खोलेंगे तो वापिस आपको ये फिलअप करने के लिए बोलेगा. क्लिक ऑन, ओके, फिलअप करो. एंड ओके, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, क्विकली.
ओके अगर कंपनी का मेल नहीं है तो डायरेक्ट ये पेज भी यूज कर सकते हो। ओके चैट पे डाल देता हूँ। ओके सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक विच आई हैव शेयर यू ऑन चैट। चैट पे जो लिंक दिया है उस पे डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दो, एक्सेप्ट करो एंड सबमिट क्वेरी। वंस यू क्लिक ओके तो ये डाउनलोड लिंक आ जाएगी, आपको डाउनलोड करना है। ऑलराइट तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओके जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड इट। ऑलराइट जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा देन लेट मी शो यू दैट फोल्डर इफ आई कैन। Okay, just say, let me start the share. Okay, I hope you can see the screen. Hmm. Let me just zoom it for you. Okay, now let me check whether I am sharing the same page. Okay, all right, so मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये रहा zip file. All right, so this is the zip file जो डाउनलोड हुआ है। Okay, इसको unzip करो। Okay, so I will extract here. Okay, और वर्चुअल आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके जैसे आपने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की होगी, बहुत सारे जनों ने, जिससे नहीं की इट्स फाइन, यू कैन जस्ट check the steps. Similarly, same steps here. All right, so you will get this file. All right, so मैं कौन सा ये वाला Sophos virtual OVF हमें import करना है अपने उस पे वर्क स्टेशन पे। All right, so these are the files. Okay, once you download, unzip it and उसको extract कर लेना है। That's it. उसके बाद आपके जो वर्क स्टेशन है उस पे जाना है। Go to your workstation. Okay, let me share the screen. Okay, you are on the workstation now. All right, so ओपन वर्चुअल मशीन, दैट्स इट। ओपन है वर्चुअल मशीन, डायरेक्ट उस पर क्लिक है, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। देखो ये सारी फाइल्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है। ओके तो आपको एस एफ वर्चुअल ओवीएफ पे क्लिक करना है। वर्चुअल फायरवॉल है, सोफोस फायरवॉल वर्चुअल डॉट ओवीएफ। ओपन एंड अगर आपको नाम देना है तो दे दो, या फिर इट्स फाइन यू कैन गिव डिफॉल्ट, इट्स ओके। सो आई विल जस्ट पुट इट हियर somewhere. Okay, my path, you can give the path if you want, and I will click on import. Okay, so it will start importing the SF virtual files. So wait for a second. All right, so once it is uploaded, it will look like this. Okay, default setting le lega 4 GB. It will take around 4 GB. Okay, processor it will take 1, and hard disk around 80 GB here. Okay, so minimum 80 GB is required. Alright, and you can see 4 GB is minimum requirement. So जो डिफॉल्ट है वो ले लिया उसने। ओके जितना उसको डिफॉल्ट चाहिए। ऑलराइट नहीं तो इससे कम लोगे, इट विल गो टू फेल सेफ मोड, यानी वो बूट ही नहीं होगा आपका फायरवॉल। ऑलराइट स्पेशली इन दी मेमोरी। ओके इसको तो कम कर सकते, इट्स फाइन, बट वो परफॉर्मेंस में इशू आएगा। ऑलराइट सो इट विल टेक द डिफॉल्ट्स। ओके यूज द डिफॉल्ट, इट्स फाइन। एंड लेट्स टर्न ऑन दी वर्चुअल मशीन डायरेक्टली। ओके उसको बाद में आप फाइन ट्यून कर सकते हो, यू विल फाइन ट्यून सम द सेटिंग्स इन द एंड। ओके सो दिस इज द एफएस लोडर। तो लैब पे भी देखेंगे हम कैसे जो एफएस का जो लोडर है जहाँ पे दो हमारा फर्मवेयर होगा। तो आप अगर किसी में रिवर्ट करना है, ट्रबल शूट कर रहे हो तो रिवर्ट करना है, दो फर्मवेयर वर्जन हम स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर प्रीवियसली बूट करना है या फिर वापस डाउनग्रेड करना है या फिर अपग्रेड करना है, हम एफएस लोडर से करेंगे। ऑलराइट बट that would be advanced troubleshoot. You don't have to look into the FS loader until and unless जब आपके पास फिजिकल फायरवॉल हार्डवेयर आपने परचेज नहीं किया। अगर आपने फिजिकल हार्डवेयर परचेज किया है तब हम, अगर उसके हार्डवेयर पार्ट को ट्रबल शूट करना है तब हम एफएस लोडर में जाएंगे। जैसे अगर पोर्ट नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लिंक नहीं हो रहा है, या फिर हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है, एंड सो ऑन। सो सारे जो टेस्ट है हम वो वहां से कर सकते हैं। ऑलराइट सो
यहाँ पे आपका हम लैपटॉप पे करें, मेरा लैपटॉप 8 GB है, ऑलराइट। सो 4 GB आपका यूज करेगा विंडोज, एंड 4 GB नाउ इट यूज्ड बाय दी सोफोस फायरवॉल, ऑलराइट। तो सोफोस फायरवॉल यूज करेगा यहाँ पे, ऑलराइट। सो इट विल गेट बूटेड, तो आपकी थोड़ा वीएम का सेटिंग्स देख लो, ऑलराइट। सो इफ आई थिंक आई बिलीव इट इज अंडर एडिट और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर्स, या फिर आपका जो भी वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है, वहाँ पे जाओ। तो मैंने देखो यहाँ पे दो क्रिएट करके रखा हुआ है, ओके। सो वन इज 192.165 वाला नेटवर्क यूज किया है, ऑलराइट, एंड वन नेटवर्क इज देयर, ऑलराइट। सो विल नॉट बी यूजिंग दिस। सो वीनेट 1 एंड 8, तो ये ऑटोमेटिक अगर आपने वर्चुअल डाउनलोड किया, राइट, तो आपको आपके एडेप्टर्स में दिख जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द नेटवर्क करंटली यूजिंग। तो अगर मुझे फायरवॉल, ये जो फायरवॉल है, ठीक है, एक्सेस करना है अपने लैपटॉप पे, तो आप ये नेटवर्क 172.16.16.0 दे दो, या फिर आप अब खुद का नेटवर्क यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप फायरवॉल पे जाके नेटवर्क चेंज कर दो, ऑलराइट। क्योंकि देखो, अगर मैं इफ आई गो टू CMD, ओके, CMD भी ओपन करते हैं। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन, ओके। आई थिंक यू विल बी एबल टू सी, या अब देखो यहाँ पे, इफ आई चेक IP config/all, so I will be seeing सारे मेरे को नेटवर्क एडेप्टर्स यहाँ पे दिखेंगे, राइट। सो इफ आई स्क्रॉल, ओके, सो लेट मी स्क्रॉल अप, सो इट्स हियर 8, ओके, ये रहा यहाँ पे, सो 81, एंड इफ आई स्क्रॉल अप आई विल गेट VNet 1, तो ये रहा मेरा 5 वाला नेटवर्क, ओके। और मैंने IP दिया है 101 इस PC को, लैपटॉप में ये वाला IP दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइल का IP चेंज कर दूंगा, डिफॉल्ट IP चेंज कर दूंगा और डालूंगा 192.168.5.1 या फिर 10, कुछ भी डाल दो, ऑलराइट, लेट्स से। सो लेट मी जस्ट गो टू द फाइल, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड पूछ रहा है, क्या डालना है, एडमिन। जब पहली बार बूट कर रहे हो तो एडमिन डालो एंड प्रेस एंटर, ओके, एंड प्रेस A। राइट, सो देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन आ रहे हैं। फायरवॉल वर्जन कौन सा है, 19.5.3.MR5, और बिल्ड वर्जन है 652, राइट। दीज आर दी बिल्ड वर्जन, यानी उसमें जो भी बग्स उन्होंने फिक्स किए, परफॉर्मेंस फिक्स किया है, वो हम रिलीज नोट पढ़ेंगे, बट विल बी नॉट वरिंग अबाउट द फर्मवेयर वर्जन, ऑलराइट, इन राइट नाउ। बट अभी इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम फर्मवेयर का जो भी वर्जन होगा, बिल्ड होगा, वो डिस्कस करेंगे, उस बिल्ड में क्या उन्होंने फिक्स किया है, ओके। सोफोस, ऑलराइट। सो वी हैव फर्मवेयर वर्जन, देन मॉडल नंबर, अभी तो वर्चुअल है तो आपको वर्चुअल दिखेगा, ऑलराइट। सो इट इज वर्चुअल, होस्ट नेम नहीं दिया तो अभी ब्लैंक है। मेन मेनू अगेन, और अगर आपको यहाँ पे AA डिवाइस एक्टिवेशन दिख रहा है, दैट मीन्स आपका फायरवॉल रजिस्टर नहीं है, ऑलराइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन, जैसे रजिस्टर करोगे ये चला जाएगा, okay। Then we have option number 120, network configuration, system configuration, route configuration, device console, device management, and VPN management, shutdown and exit, alright। तो ये तो हमने ऑलरेडी एक बार गो थ्रू किया था, राइट, बट ये देखेंगे। So this is the console access of the firewall right now, alright। So what I will do, I will go to option number 1, मुझे IP एड्रेस चेंज करना है, तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा, ऑलराइट। बाद में सारे 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शंस देखेंगे, ऑलराइट, कब हमें ये काम आएगा, हमें क्या इसका यूज कहाँ पे है, एंड सो ऑन। सो आई विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 1। वंस यू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 1, तो आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर यहाँ से कर सकते हो, ओके। जितने भी इंटरफेस है, जितने भी पोर्ट्स है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आई विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 1। अभी देखो, ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया तो इंटरफेस A दिख रहा है मुझे, राइट। सो इंटरफेस A डिफॉल्ट आईपी क्या है, 172.16.16.16, करेक्ट। सोफोस का डिफॉल्ट आईपी हमेशा यही होगा, जब आप पहली बार बूट करोगे तो यही होगा। अगर नहीं पता है तो भी क्या करो, कंसोल एक्सेस ले लो तो पता चल जाएगा, राइट, कौन सा आईपी यहाँ पे, कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है आपने। सो इट इज वेरी इजी, ओके। सो वी विल चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ दिस, क्योंकि हमें मेरा वर्चुअल में है, वो मैंने 5 वाला नेटवर्क डाला है इसको रीचेबल करने के लिए। तो या फिर मैं फाइल पे इसको
नेटवर्क चेंज कर दूं या फिर मैं अपने वीएम में जाके चेंज कर सकता हूँ, राइट? पर मैं अपने वीएम को ऐसे रहने देता हूँ, इसका ही चेंज कर देते हैं, राइट? सो इस वी विल नो हाउ टू चेंज दी नेटवर्क ऑन द इंटरफेस, राइट? और पोर्ट बी पे आपका जो मेरा जो सेटिंग है, राइट? सो इफ आई चेक माय सेटिंग्स, तो मैंने इसको ब्रिज किया हुआ है अपने वाईफाई राउटर से, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसकी सेटिंग्स, सो लेट मी जस्ट गो टू एडेप्टर्स, ओके? तो जो एडेप्टर है मैंने ब्रिज किया हुआ है, ऑलराइट? सो यस, सो इट इज ब्रिज्ड, दैट इज द रीजन मुझे वहां से आईपी मिल रहा है, ऑलराइट? ओके, वी विल चेक दिस सेटिंग्स। ये आपके वर्चुअल जो वर्चुअल है उसका सेटिंग्स है, ऑलराइट? तो वो एडेप्टर जो होगा, नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पे, वो आपका पोर्ट ए होगा, ये फिर बी होगा, उसके बाद ये सी होगा एंड सो ऑन। तो आप ऐड भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, जो भी आपको हार्डवेयर टाइप्स ऐड करने, जैसे कि इंटरफेस ज़्यादातर नेटवर्क एडेप्टर्स ऐड करना है ज़्यादा, ओके, यू कैन ऐड इट। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा रैम है, ज़्यादा सीपीयू कोर्स है, और आपको यहाँ पे वीएम में चलाना है, देन यू कैन रन इट, ओके? You can run it and you can add the adapters and you can add other hardware types if it is required. तो जो पहला adapter होगा वो पोर्ट ए होगा, ऑलराइट? सो आई थिंक मैंने कस्टम तो किया है, राइट? तो वीनेट 1 पे डालते हैं इसको, राइट? और जो दूसरा वाला तो ऑलरेडी वो ब्रिज्ड ही है, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली मेरा जो वाईफाई अडेप्टर है उससे कनेक्टेड है। अदरवाइज एक अलग अलग से आप क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर नेट कर सकते हो और वहां से वो आईपी उठा लेगा, राइट? सो ये आपका वैसे ये वर्चुअल वर्क स्टेशन का सेटिंग्स है, राइट? सो अगर नहीं चल रहा है, दैट मीन्स यू टू सेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट? सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके, राइट? और सो मुझे जो पोर्ट बी का जो आईपी है वो तो मिल ही रहा है मेरे अपस्ट्रीम राउटर से, राइट? जो मेरे घर पे राउटर है उसका 0.1 आईपी है, ऑलराइट? मैंने अभी रिसेट किया है, उसकी वजह से वो डिफॉल्ट में, बट डोंट वरी अबाउट माय नेटवर्क। दिस इज द आईपी आई गॉट एंड दिस इज द गेटवे एड्रेस। प्रेस एंटर। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ अपना आईपी एड्रेस, ऑलराइट? पोर्ट ए का, राइट? सो लेट्स चेक। ओके, ओके, थोड़ा आराम से लैपटॉप पे हो सकता है परफॉर्मेंस इश्यू है, ऑलराइट? सो सिलेक्ट ऑप्शन 1 अगेन, ऑप्शन 1 नेटवर्क इंटरफेस, ऑलराइट? प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी दो ही पोर्ट है उसलिए दो ही आएंगे, ओके? वंस यू प्रेस कंटिन्यू, जस्ट वेट, अगर मेरी तरह थोड़ा सा स्लो है, ओके? नाउ इट विल आस्क दैट, ओके? तो सेट IPv4, अगर आपको IPv4 चेंज करना है, अगर यस तो वाई लिखना है, नो तो नो करना है, ऑलराइट? तो करना है तो यस करना है, राइट? नो करेंगे तो नो ही रहेगा, बट लेट्स चेंज इट, यस। तो सबसे पहले पोर्ट ए पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू हैव टू कम बैक, ओके? तो देखो अभी आईपी में चेंज करूंगा इसका, ठीक है? कंसोल से मैं चेंज कर रहा हूँ। सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम कंसोल, आइदर फ्रॉम जीयूआई और कंसोल ऑल्सो, दोनों से चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कंसोल से करना पड़ेगा, वीएम वेयर से, ऑलराइट? क्योंकि अभी तो जीयूआई आएगा ना, क्योंकि नहीं आएगा उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास वो भी नेटवर्क नहीं। आप चाहे तो सीधा उसको एक्सेस कर सकते हो, जस्ट वो नेटवर्क पे डाल दो 172.16.16.16, और जो आपका नेटवर्क है तो उस पे डालते हैं। सो इट वुड बी लाइक 192.168.5. ओके, 10, मैं 10 आईपी दे रहा हूँ, प्रेस एंटर। नया आईपी 255.255.255.0, ठीक है? तो आपने चेंज कर दिया नेटवर्क, राइट? सो करंट आईपी है यहाँ पे 172.16.16.16, नया आईपी क्या होगा? 192.168.5.10, एंड करंट सबनेट तो ये है /24। वैसे ही मैंने इसका भी स्लैश, आप जो सबनेट आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, इट्स फाइन। प्रेस एंटर, ओके? सो चेंजिंग आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस, तो आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ओके? इट विल चेंज, वो चेंज हो जाएगा, ओके? वेरीफाई भी करते हैं एक बार उसके बाद।
ओके तो वर्क स्टेशन कहाँ से डाउनलोड करना है तब तक तो गूगल पे लिखोगे VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड करना है, देन इट विल गेट। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया वो डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, एंड यू कैन इंपोर्ट द सिमिलर वे वेयर जैसे मैंने किया है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो नहीं चल रहा है, ठीक है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल डू सम सेटिंग ऑफ द VM। माइट बी द VM सेटिंग्स की ही जरूरत होती है, राइट। आपको नेटवर्क एडेप्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वर्चुअल नेटवर्क एडेप्टर्स, उससे आप एक्सेस कर पाओगे। ऑलराइट, सिंपल। सो विल सी दैट। ओके, नाउ लेट मी जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये IP चेंज हो रहा है तब तक। ओके सो IP चेंज हो चुका है, राइट। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नाउ प्रेस 1 and see whether it got changed or not. So now it is 192.168.5.10। ओके, तो मेरा नेटवर्क कौन सा है? 5.10, जो मेरे वर्चुअल एडेप्टर का नेटवर्क है, राइट। जो मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया था, राइट, तो मेरा नेटवर्क ये रहा। ऑलराइट, तो ये भी मेरे ब्रिज किया हुआ है अपने इंटरफेस पे। ऑलराइट, सो इट्स डन। नाउ लेट मी शो यू माय सेटिंग्स, राइट। if I can share you my settings. Okay, let me show my network adapters. All right, I hope you can see the screen. Yes, I believe yes. Okay, yeah. So you can see my screen, right? So here I made a network adapter, right? So 8 and 5. So these are virtual, right? अगर मैं इसकी properties देखूं, so let's see the properties. Okay, automatic create हो जाएंगे जैसे आप VM में कर रहे हो, तो ये VM के ही network adapters हैं. All right, so if I click on property, okay, तो देखो यहाँ पे सेम चीजें जो है। Now हेलो let's हेलो open the CMD, हेलो भरत सर। okay, और पिंग करके देखते हैं, पिंग हो रहा है। हेलो भरत सर। हेलो 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 भरत सर। Okay, you can see. हेलो So I will ping 192.168.5.10. ओके, सो देखो अभी मेरा 5.10 क्या था? फायरवॉल था, राइट, तो वो तो रीचेबल हो गया। ओके, ऑलराइट, सो अभी एक बार टेलनेट करके भी देखते हैं। सो 192.168.8.5.10. ओके, सो 192.168.5.10 IP एड्रेस है, 4444 फायरवॉल का IP। ओके, तो टेलनेट भी हो रहा है, दैट मीन्स फायरवॉल इज रेडी। नाउ ओपन द ब्राउजर। ओके, जो डाउनलोड किया है वही एक्सेस करते हैं। सो आई विल एक्सेस, हाँ, ओके, या कैन यू हियर मी गाइस? हेलो भरत सर। यस रितेश, सर ये जो वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोग इमेज डालते हैं, जस्ट गिव अ ये मिनट। ये इमेज हम लोग मतलब कुछ लाइसेंस का मतलब कुछ फिक्स दे रहता है कि इतने 30 दिन या 60 दिन तक ही यूज कर सकते हैं, या फिर कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? 30 डेज के लिए यूज कर सकते हैं रितेश। ओके, थैंक यू। 30 डेज से के बाद क्या करना है आपको? वापिस उसको रजिस्टर कर देना, तो नेक्स्ट 30 डेज आ जाएगा, तो 60 डेज हो गया। तो ओके, जैसे ही 30 डेज फिनिश हो जाता है तो वापिस उसको रिन्यू कर दो, तो वैसे आप यूज कर सकते हो। बट ठीक एक है कि इस पे आपका ऐसी मेहनत लगेगा, लाइक आफ्टर 30 डेज है। आपको वापिस एक बार वो रजिस्टर करना है। ओके सर। ओके, फिर आप पूरा साल भी चला जाएगा, इज फाइन। सो लेट्स एक्सेस 5.10। ओके, 4444। ऑलराइट, तो अभी देखो मेरे लैपटॉप पे ही एक्सेस आ गया है। ऑलराइट, सो क्लिक ऑन एडवांस। ओके, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। अभी सेम वे जो हमने रजिस्टर किया था, फायरवॉल रजिस्टर करना है। जैसे हमने लैब पे किया था वैसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपका फायरवॉल रजिस्टर हो जाएगा। ओके, आई माइट हैव सम इश्यू, सो ऑल्सो एक बार रेज कर देना, ठीक है? रेज योर हैंड्स, ओके, देन लेट मी नो
so that I can stop and I can be with you and I can help you to solve your queries. Okay, जो भी queries है. ओके तो आपका ऐसे इनिशियल पेज आ जाएगा. ऑलराइट, सो माइट बी आई एम रनिंग लॉट ऑफ एप्लीकेशन, सो थोड़ा सा ये स्लो रहेगा. सो सेम स्टेप्स है राइट, जो मैंने लैब पे किया है. ऑलराइट, सो लेट्स रजिस्टर दिस फायरवॉल. क्लिक ऑन एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक ऑन सेटअप. ओके, फायरवॉल का एक्सेस अगर वीएम यूज कर लिया है ऑलरेडी देन इट इज वेरी इजी फॉर यू. देखो फायरवॉल का एक्सेस आ जाएगा. अगर वीएम वेयर यूज नहीं किया है या फिर कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना. ऑलराइट, मैं आपको सेटअप कर दूंगा. फायरवॉल आपको सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि स्टेप्स तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ऑलराइट, मैं पिंग करके दिखा दूंगा तो आपका पिंग हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सेटअप द फायरवॉल ऑन द पीसी फर्स्ट. ओके, तो पासवर्ड दे दो. राइट, एंड इट्स फाइन. अगर नहीं क्लिक करोगे नहीं करोगे तो भी वो ये लेटेस्ट फॉर्म पे ले लेगा. ठीक है, तो बेसिक पासवर्ड दो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. राइट, तो फाइल का नेम है वो होस्ट नेम है. राइट, जैसे हम होस्ट नेम देते हैं राउटर्स में स्विचेस पे, वैसे ही जो फाइल नेम है वो होस्ट नेम रहेगा. सो यू कैन गिव द नेम लाइक वट एवर यू वॉन्ट. सो दिस इज माई हेड ऑफिस. ओके, नेट गुई का मेरा हेड ऑफिस है. एंड देन टाइम जोन, तो टाइम जोन सिलेक्ट करना है. ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने से हो जाएगा. क्लिक ऑन कंटिन्यू. ओके, तो इनिशियल सेटअप विजार्ड हमारा सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे राइट अभी तक पीपीटीज में. राइट, सो अगेन सेम स्टेप्स. लैब पे भी सेम स्टेप्स है, वर्चुअल में भी सेम, यही से सेम. रजिस्टर करना है फायरवॉल तो सेम स्टेप्स ही रहेगा सब जगह पे. राइट, तो फ्री ट्रायल है. अगेन अभी वी आर यूजिंग फ्री ट्रायल. अगर नहीं करना है तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू रजिस्टर नाउ. राइट, 30 डेज का ये सपोज 30 डेज अगर पूरे हो जाते हैं तो वापस एक बार उसको रजिस्टर करो. जैसे किया था, बैकअप ले लो और बैकअप वापस रिस्टोर भी कर सकते हो. राइट, सो यू कैन रिस्टोर द बैकअप अगर वापस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है तो. अदरवाइज अगर आपको ये फाइल एज ए टेस्टिंग पर्पस के लिए है तो 30 डेज फ्री ट्रायल वर्जन फ्री हो जाता है. वापस रजिस्टर करो, वापस 30 डेज मिल जाएगा एंड सो ऑन. क्लिक ऑन कंटिन्यू. लेट्स क्लिक ऑन लेट me click on continue. Okay, let's register it. It will not take much time. Okay, 5-10 मिनट हो जाएगा. थोड़ा सा स्लो है because I'm utilizing some of the memories. All right, so let me close some application if I can. Okay, so you have to select second option, start trial. ओके, सो सबके पास सोफोस आईडी है. ऑलराइट, जिसके पास नहीं है यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट सोफोस आईडी. ऑलराइट, सोफोस आईडी से आपके ऑफिस के जो ईमेल एड्रेस है उससे क्रिएट करो तो बेटर रहेगा. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल ये वाला जीमेल से भी हो जाएगा. सो यू कैन ट्राई विद द जीमेल. राइट, बट मेरे पास है सो डायरेक्टली आई विल साइन इन. ओके, साइन इन ही करना है. जिसको रजिस्टर करना है तो वापिस एक वीडियो ऐसे ही हाउ टू क्रिएट द आईडी वो अलग से दे दूंगा. ऑलराइट, इजी है, इतना नहीं है उसमें कुछ भी. सो लेट मी साइन इन. Okay, so put the password. Okay, I think I have the password here saved. All right, so I think it's done. ओके, तो मुझे देखो एक की मिल चुकी है. ओके, मेरा फाइल का अप्लायंस की सीरियल नंबर. जब आप केस रजिस्टर करते हो तो ये की देना पड़ता है सपोर्ट में. ऑलराइट, सो लेट मी क्लिक ऑन नॉट रोबोट एंड नेक्स्ट कंटिन्यू. Okay, and yeah, it will retrieve some details and register the firewall.
ओके, तो मेरा जो लैपटॉप का जो ट्रैफिक होगा अभी कहाँ से जा रहा है, मेरे राउटर से जा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एज ए प्रॉक्सी यूज करूंगा यहाँ पे। अभी के लिए एग्जांपल में देख लेते हैं, उसके बाद हम इस इसको वो डिटेल में एक अलग से डेडिकेटेड मॉड्यूल है तो हम वो डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, कैसे एक्चुअली काम करता है प्रॉक्सी, वेब प्रॉक्सी, प्रॉक्सी एंड गेटवे मिक्स मोड, ये सब कोर्स वो तो कर ही रहे हैं। बट ये लैब पे हम चला लेते हैं, राइट। यहाँ से इसका ट्रैफिक फावल से जाना चाहिए, जो लैपटॉप का मेरा जो, अगर मैं कुछ भी एक्सेस करता हूँ वेब से, वो उसका ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, ये जो वीएम में जो मैंने फायरवॉल इंस्टॉल किया है, यानी वो मेरा गेटवे रहेगा। ओके, तो एज ए प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, सो बिफोर वहाँ पे जाए उससे पहले डिवाइस डिटेल्स, ये सब कोर्स, सीरियल नंबर मिल गया, प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, जब आप परचेज करते हो तो भी आपको यहाँ पे आपके मॉडल नंबर दिखेगा। ओके, सब वेरीफाई करना है। इवोल्यूशन लाइसेंस है, फ्री लाइसेंस है, राइट, सब्सक्राइब लाइसेंस नहीं है। सो इट इज 30 डेज ट्रायल्स। ओके, डायरेक्टली क्लिक कर दो यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन, दैट इज फाइन। ओके, आप थोड़े जो भी टर्म्स कंडीशन अपने से रीड कर सकते हो, इट्स फाइन। सो अभी तो हम देखेंगे वर्किंग विद दी लैपटॉप। ओके, लैपटॉप पे फायरवॉल कैसे, वी हैव टू इंस्टॉल द फायरवॉल, और कैसे लैपटॉप का ट्रैफिक है वो आप स्कैन भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि कोई वायरस वाली वेबसाइट विजिट कर लो एंड ट्राई टू डाउनलोड एनी वायरस एंड सी वेदर सोफोस इज, ये ब्लॉक करता है कि नहीं, राइट। सेटिंग्स बता देता हूँ, फिर हम लैब पे प्रैक्टिस करेंगे। उस पे रैमसमवेयर या फिर कोई वायरस मालवेयर डाउनलोड करके देखेंगे ब्लॉक हो रहा है कि नहीं, ऑलराइट, एंड वी विल सी द वर्किंग। ओके, ब्लॉक हो जाएगा, डोंट वरी, we will not compromise any of the virtual system, not our laptop also. But the configuration proper है, then it will automatically block the traffic. नो, आप अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो, जब भी आप सोफोस फायरवॉल डाउनलोड जो स्टेप्स मैंने बताया प्रीवियसली, वही सेम ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो। ओके, एक ईमेल एड्रेस चलेगा, बट जीमेल ना हो तो बेटर है, ऑलराइट। कंपनी का है तो डोमेन है तो सबसे बेटर रहेगा, आपको कहीं पे इश्यू नहीं आएगा। जीमेल में सिर्फ आप सोफोस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फायरवॉल अगर फ्री वाला डाउनलोड करना है तो शायद नहीं होगा, ऑलराइट। बट मैंने जो लिंक दी है उससे आप, एक ट्रिक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स फाइन। या दिस, या दैट इमेजेस, ये सब में चलेगा। ये जो लिंक है ना उसका, आप पेन टेस्ट में भी चलेगा, जीएनएस में भी अलग ही स्टेप है, उसमें आपको वहां से ही मिल जाएगा सारे इमेजेस। पेन टेस्ट में भी कर सकते हैं, यस। ऑलराइट, सो आई थिंक रीट्राई, क्या हुआ इसको, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फायरवॉल। लेट मी क्लिक अगेन, सेम एरर दे रहा है। अगर सेम एरर दे रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, वापस। ओके, ओके, तो हो गया रजिस्टर। ओके, सो इनिशियल लाइसेंस पे क्लिक करो। यस केतन, पेन टेस्ट में आप ट्राई कर सकते हो जाएगा, सेम लिंक। ओके, सो यू कैन स्किप सम ऑफ द टेस्ट। ओके, वीडियो पे जाके फिर थोड़ा सा स्किप कर देना, इट्स फाइन। ऑलराइट, सो आई विल जस्ट क्लोज सम ऑफ द टैब्स। तो फायरवॉल एक बार बूट होगा, मेरा रजिस्टर तो हो चुका है फायरवॉल। ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर अनदर 5 minutes। राइट, मीनवाइल, जिनको नहीं पता, वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड लिखो तो आ जाएगा शायद। ओके, सो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड वर्क स्टेशन प्रो जो मेरे पास है। ऑलराइट, जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, यू कैन यूज
द फ्री ट्रायल वर्जन 17 वर्जन है, अभी मेरे पास 16 है, सो यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वन, राइट? सो क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ। ये आपका VMware बता रहा, ओके, सपोज नहीं, बट ओके, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल हो जाएगा। फ्री ट्रायल वर्जन पे क्लिक करना है, राइट? एंड यू माइट फाइंड डॉक्यूमेंटेशन इन द इंटरनेट। You don't have to follow in the internet, just download this exe and run the exe, next, okay, and you will see the options. Options को follow करो, install हो जाएगा। The only thing is that you have to, आपका जो वर्चुअल अडेप्टर्स होंगे, ठीक है, वो आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देना। मैंने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है। यू कैन कॉन्फ़िगर एज पर योर सेटअप। आपका सेटअप क्या है? अगर नहीं चलता है तो नो वरीज, जिसको इसके बारे में नहीं पता है कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। ऑलमोस्ट बहुत सारे जनों को पता होगा, सो इग्नोर माय स्टेप्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी द स्टेटस ऑफ द firewall. Okay, so it will take some time and then we will go back to the labs पे कल हम देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं जो हमारे स्टेप्स थे। Okay, so serial number basic setup is completed एंड देखो अभी आपको लाइसेंस मिल चुका है, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन बंडल पूरा का पूरा। ऑलराइट, सो जैसे बताया लाइसेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नो वरीज। अभी अभी इट वुड बी सम, इट विल टेक सम टाइम, सो विल डिस्कस अबाउट दैट। लाइसेंस 3 वर्जन में, 1 साल 2 साल 3 साल वाला ले सकते हो, और जो भी परचेस करना इंडिविजुअली या एक पैक में भी ले सकते हो, राइट? जो नहीं चाहिए वो हम नहीं ले सकते। जैसे कि हमें सिर्फ वेब प्रोटेक्शन और नेटवर्क प्रोटेक्शन चाहिए तो दोनों का लाइसेंस ले सकते हैं, रेस्ट वी कैन स्किप इट। ऑलराइट, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन। सो देखो अभी मेरे को लाइसेंस मिल चुका है 19 तक, ओके, सो यू नो, अभी तो सबको पता होगा, राइट? ये तो बहुत सारे बार हमने किया हुआ है। So this is the details. Click on continue. Okay. Now next is network LAN configuration, ठीक है? तो अगर आपको ये ब्रिज यूज करना है तो ऐसे ब्रिज यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर राउट मोड है तो राउट मोड, यानी प्रॉक्सी यूज करना है तो प्रॉक्सी। बाय डिफॉल्ट ये राउट मोड में रहेगा। अगर ब्रिज करना है तो ब्रिज भी कर सकते हो। ओके, टेस्ट करके देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, बट हम तो लैब पे करेंगे, विल सी दैट डिफरेंस। फर्स्ट वी आर गोइंग विद द राउट मोड, पहले हम राउट मोड से ही पूरा ये कोर्स करेंगे, देन वी विल गो विद द ब्रिज। और मिक्स मोड तो है ही हमारे पास। अगर आपको यहाँ से ही अगर नेटवर्क चेंज करना है तो कर सकते हो। ओके, तो आईपी एड्रेस चेंज कर दो फायरवॉल का। ये तो मैंने वहां से लिया मैनुअली, क्योंकि मेरे पास वीएम था इसलिए मैंने चेंज किया है। अगर आपको चेंज करना है ये चेंज कर देना। ऑलराइट, यू कैन पुट द आईपी एड्रेस ऑफ द फायरवॉल, नया आईपी एड्रेस दे दो। डीएससीपी रन करना है तो उसका रेंज देना है तो दे दो, इट्स फाइन। नहीं रन करना है तो डिसेबल कर दो, दैट इज फाइन। सो दिस इज योर लैन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैं तो डिफॉल्ट ही रखने वाला हूँ, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट होगा, ओके, डीएससीपी ऑलरेडी वर्किंग है। ओके, एक डीएससीपी ऑलरेडी वर्क कर रहा है, राइट? मेरे पोर्ट बी पे ब्रिज किया हुआ है ना, उसकी वजह से। सो कोई बात नहीं, इसको डिसेबल कर दो। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन लीव दिस एज इट इज, उसको कोई टिक मार्क नहीं करना है। अगर टिक मार्क है तो अनटिक कर दो, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, राइट? दैट इज दी कॉन्फ़िगरेशन, वो ही कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, बट इन केस नॉट वर्किंग इन द लैब, एक बार रिबूट करके देख लो, मीन्स वो स्टार्ट स्टॉप करके देख लो नोट्स, तो चलने लगेगा। राइट, सो लीव एज इट इज, क्लिक ऑन कंटिन्यू। बैकअप एंड नोटिफिकेशंस कौन से ईमेल एड्रेस पे आने चाहिए उसमें, तो वो ईमेल एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अनटिक कर दो इसको पहले तो। ओके, और मेल एड्रेस डाल दो, कोई भी डालोगे चलेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, वो बाद में करेंगे। ओके, तो अभी के लिए ये इनिशियल सेटअप विजार्ड है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो ईमेल एड्रेस नहीं डालोगे तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। सो ऐसे ही रैंडम ईमेल एड्रेस अभी मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद अगेन कॉन्फ़िगरेशन समरी।
तो जो भी आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया होगा, अगर देखो यहाँ पे डीएचसीपी रन हो रहा है ना उसकी वजह से, और जो आपने होस्ट नेम दिया है फावल का, टाइम जोन, नेटवर्क सेटिंग्स, फिर ये आपका है फावल रूल, डिफॉल्ट ये नाम होगा, डिफॉल्ट नेटवर्क पॉलिसी ये करके रूल होगा, फावल लैन टू वैन, लैन से वैन की तरफ। ओके, और ये जो जितनी भी फीचर्स है वो डिसेबल है। मैंने स्कैनिंग बैनिंग नहीं करना है अभी, वो बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे बताया अगर इसको पहले ये एनेबल कर दिया है, जैसे वो टिक मार्क कर दिए थे, ओके, अगर प्रीवियस में जाऊं तो टिक मार्क कर दिया तो एरर्स आएंगे सर्टिफिकेट्स के। तो अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक्सेस लेकर मैं धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है वो देखेंगे। और एक रूल क्रिएट होगा नेट रूल। तो नेट रूल आपका होगा जो ट्रांसलेट करेगा मास्क मीन्स एज ए नेट डिवाइस यूज करेगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट एक नेट रूल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फायरवॉल रूल क्रिएट हो जाएगा, आपको इंटरनेट मिल जाएगा। ऑलराइट, और बैकअप नोटिफिकेशन इट्स फाइन, यू कैन लीव, क्लिक ऑन फिनिश। ओके, तो ये बूट होगा। सो एक कंटिन्यूस पिंग करके रखो अपने फायरवॉल को। ऑलराइट, 5.10 है। सो ओके, सो जब ये वापस आएगा तो पता चलेगा, वंस वंस द पिंग इज बैक, जैसे पिंग वापस आ जाता है दैट मीन्स फायरवॉल इज अप, टेलनेट करके देखो, देन ट्राई टू एक्सेस द जीयूआई। ओके, तो फायरवॉल एक्सेस आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो मेरे लैपटॉप का ट्रैफिक है वो फायरवॉल से जाना चाहिए। ठीक है, 5.10 से जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 0.1। अभी जो 0.1 जो मेरा ये वाईफाई का टीपी लिंक राउटर है वहां से नहीं जाएगा, बट मैं एज ए प्रॉक्सी यूज करूंगा। ओके, तो प्रॉक्सी सिनारियो भी पता चल जाएगा। बट प्रॉक्सी के बारे में हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल्स है, सिक्स्थ मॉड्यूल, तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉक्सीज हैं, फायरवॉल को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज ए प्रॉक्सीज अलग अलग सिनारियो में। ऑलराइट, सो दिस इज द वन ऑफ द सिनारियो जहाँ से आपका वर्चुअल है, राइट। तो हम जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो कहाँ से पास करेंगे, फायरवॉल से जाने देंगे। ऑलराइट, फॉर स्कैनिंग पर्पस। ओके, तो सबसे पहले आपको वीएम डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू डाउनलोड द जिप फाइल फ्रॉम सोफोस फ्री ट्रायल वर्जन। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है ओवीएफ फाइल एंड देन रन इट। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दिस। meanwhile let me show you some documents। okay, notes भी डिस्कस कर लेते हैं। okay, so it's under like Sophos doc docs करते हैं। so it's like a notes। okay, so you can अभी से रिफर कर लो इसको, ये भी नोट्स ही है। alright, so you can refer all the steps, सारे नोट्स पे, सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टेप्स सब अवेलेबल है। ओके, समझने के लिए तो मैं ही हूँ। ऑलराइट, that I will make these things happen। All right, so let me just go and type Sophos admin help। okay, Sophos online help जो हमने लैब पे ही पढ़ा था, राइट। so administrator help, how startup guide, we have admin help, user portal, high ability and command line commands जो मैंने आपको बताया था, राइट। so let me open the first one and share with you। all right, so hope I'm sharing this link, all right, to all of you। go through this link। तो ये आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, जब तक ये फाइल बूट हो रहा है तब तक हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो दिस इज द ऑनलाइन हेल्प, लिंक भेजा मैंने अभी आपको चैट पे, सेव इट। ओके, ब्राउजर पे सेव कर लो आप सब लोग। ऑलराइट, सो गूगल पे जाके भी doc.sophos.com करोगे तो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑनलाइन हेल्प लिखना तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास फाइल का एक्सेस है तो वहाँ पे हेल्प पे क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प है, यूजर हेल्प है, ऑलराइट, कमांड लाइन, हाई अवेलेबिलिटी, स्टार्टअप हेल्प, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो स्टार्टअप हेल्प है। ओके, और वर्चुअल अप्लायंस हेल्प, अगर वर्चुअल पे इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वर्चुअल पे कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमने किया वीएमवेयर पे, राइट। सो यू कैन सी यू कैन इंस्टॉल Sophos Firewall इन द फॉलोइंग वर्चुअल अप्लायंसेस। तो ये जितने भी लिस्टेड है यहाँ पे आप कर सकते हो, सिट्रिक हाइपरवाइजर पे कर सकते हो, उसके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सपोर्ट करते हैं वो आप इसी में इंस्टॉल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इफ यू हैव different versions or flavors then you won't be able to install Sophos।
ओके, इन केस ऑफ सिट्रिक सर्वर से KVM में आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट. सो इफ यू हैव दिस प्लेटफॉर्म, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्जन प्लेटफॉर्म है 2016 और अबाउ, और प्रो मैक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं, राइट. तो आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर लेना, सो यू विल गेट दिस प्लेटफॉर्म्स. तो ये वाले सारे यहाँ पे जब भी सोफोस इंस्टॉल करते हो रेफर कर लो यहाँ पे, इट इज सपोर्टेड और नॉट. इफ इट इज नॉट सपोर्टेड देन यू विल नॉट एबल टू इंस्टॉल. ऑलराइट, तो सारे वर्जन्स हैं 15 और अबव पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. सो VMware में जैसा भी VMware में किया, राइट. सो मेरे पास 16 है, तो अबव 15, 16, 17 वॉट एवर जो लेटेस्ट वर्जन में होगा उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल इन vSphere क्लाइंट. ओके, जो वर्जन है अबव. ओके, जो लोएस्ट वर्जन होगा और जो लोएस्ट वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है दोनों में, तो उस पे तो आप इंस्टॉल कर सकते हो. हाईएस्ट कोई भी हो उस पे इंस्टॉल हो जाएगा, नो वरीज. राइट, न्यूट्रनिक्स सर्वर पे भी हो सकता है. ओके, द वर्जन इज नॉट मेंशन प्रॉपर्ली बट यू कैन ट्राई, बट दिस इज द न्यू वन. अदरवाइज जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो सोफोस का एग्जाम होता है उस पर पूछते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल होता है. सो यू टू टिक मार्क दिस ऑप्शंस. 6 ऑप्शंस होंगे उसमें. VMware होगा, ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये होगा, ये होगा. राइट, सो यू टू टिक मार्क दैट. Alright, so you can install the Sophos on the custom hardware पे भी कर सकते हो, विंडोज में भी डाल सकते हो, मैक ओएस में भी डाल सकते हो. बट लेट्स सी what is the requirement for the minimum hardware requirement, कौन कौन से. So let's say if I go to VMware, okay, तो यहाँ पे VMware पे क्लिक करो. So we will get more details for that. Alright, so जब भी हम VMware में इंस्टॉल करते हैं, alright, so look कौन से मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑलराइट, और कौन कौन से वर्जन्स है जिस पे आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो. मिनिमम वर्जन्स पे कौन कौन से आपके पास, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस क्रैश और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. सो हायर हायर हार्डवेयर वर्जन्स और हाईएस्ट वर्जन्स जो होते हैं उस पे करोगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, राइट. सो प्रीरिक्विजिट्स है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू दिस प्रीरिक्विजिट्स. लैब हम जो हमारा कोर्स है उस पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस वुड बी योर नोट्स एज वेल, ये आपके नोट्स भी. तो जब आप फायरवॉल इंस्टॉल करते हो तो देखो हार्डवेयर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 वर्चुअल CPU तो होना चाहिए, 4 GB रैम तो मिनिमम होना चाहिए. अगर इससे कम है, ऑलराइट, देन इट विल गो टू फेल सेफ मोड. यानी फायरवॉल का जब आप CLI लोगे तो वहाँ पे लिखा होगा फेल सेफ मोड पे. ओके, दैट मीन्स जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर रही है. दैट इज द रीजन फायरवॉल बूट ही नहीं हो रहा है. अगर आप देखना लैब पे भी कर सकते हो, उसको 2 GB देखो, 2 GB या 3 GB एलोकेट करके देखो मेमोरी. तो देखो फायरवॉल बूट होके आता है, नहीं आता है तो लोग्स में क्या आता है, लोग्स कंसोल तो आएगा, राइट. तो कंसोल में आपको लिखा होगा फेल सेफ मोड, और उसका रीजन फाइंड कर सकते हो. या फिर आपने 4 GB हार्डवेयर भी यूज कर रहे हो तो भी कभी कभी फेल सेफ मोड में चला जाएगा. रीजन होता है कि कोई कंपोनेंट करप्ट हो चुका है या फिर फाइल करप्ट हो चुकी है, और राइट, मे बी फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी करप्ट हो सकती है, एंड सो ऑन. सो जो फेल सेफ होता है उसमें कमांड आता है फेल सेफ रीजन. तो रीजन बताएगा आपको कौन से रीजन की वजह से हार्डवेयर का फेलियर हुआ है. सो विल डिस्कस अबाउट दैट, वो भी होगा एडवांस ट्रबल शूट में. बट दिस इज दी मिनिमम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दैट यू शुड नो. ओके, तो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप लिंक पे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा. ओके, वर्चुअल पे तो जो भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पे जाके हार्डवेयर मिनिमम देख लो क्या है. सो यस, इट विल गो टू द सेल्फ फेल सेफ मोड. ऑलराइट, तो मिनिमम तो वो चाहिए, नहीं तो वो बूट ही नहीं होगा. ऑलराइट, अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे स्टेप्स भी है VMware पे कैसे इंस्टॉल करना है. ESXi है आपके पास तो आपको यहाँ पे स्टेप्स मिल जाएंगे. तो जो अभी डाउनलोड किया था ना जैसे मैंने लैपटॉप के लिए, वो ये इमेज आप यूज कर सकते हो अपने VMware के लिए भी, राइट. जिप फाइल जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वही स्टेप्स दिए है. फ्री ट्रायल पे यहाँ पे क्लिक करो तो वही सेम रीडायरेक्ट हो जाएगा. डाउनलोड जिप फाइल, उसमें से OVF इमेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको आपको वी स्पेयर या फिर आपका जो भी VM प्लेटफॉर्म है उस पर आपको इंपोर्ट करना है. ऑलराइट, सो जो अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया था ये जो जितनी भी फाइल्स, ओके, इतनी सारी फाइल्स क्यों हैं.
ओके, डिस्क 1 डिस्क 2 देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो उसका सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, सो यू कैन गो थ्रू दिस टेम्पलेट। ऑलराइट, सो उस पे से हमें कौन सा यूज करना है, SF वर्चुअल वाला, सो द फर्स्ट वन। ओके, सो कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना है, यू विल गेट इट हियर। ऑलराइट, एंड देन जो अगर आपके पास vSphere है, देन कैन जस्ट लॉग इन, यू कैन डिप्लॉय योर OVF टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पे उसको ब्राउज करना है एंड दैट्स इट, नेक्स्ट नेक्स्ट करके you have to click on next and depends on your VM settings also। okay, तो VM का कैसे है वो भी देखना पड़ेगा। so you can simply follow the steps given here, जो भी steps यहाँ पे है वही follow करो, आपका firewall हो जाएगा। अगेन डिफॉल्ट IP जैसे इंपोर्ट हो जाए तो डिफॉल्ट IP से आप इसको फिर एक्सेस कर सकते हो अगेन। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर VM। सिमिलरली हाइपरवाइजर है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट का KVM है, राइट। अगर आपको करना है GNS3 पे करना है, या फिर EVNG में करना है, या फिर कोई भी वर्चुअल सिमुलेटर पे करना है, सेम स्टेप्स ही फॉलो होंगे। ऑलराइट, यू कैन कम हियर, यू कैन फॉलो द स्टेप, ये वर्चुअल में इंस्टॉल करने के लिए। ऑलराइट, तो दिस इज द वर्चुअल इंस्टॉलेशन ऑफ Sophos XG Firewall। ऑलराइट, तो ये आपका लिंक हो जाएगा। ओके, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू द स्टेप्स इफ यू वांट। नाउ लेट मी, देखो पिंग हो रहा है फायरवॉल, देखो पिंग तो हो रहा है, यानी फायरवॉल बूट होके आप आ चुका होगा। इफ आई जस्ट स्क्रॉल, लेट मी सी, देखो अभी यहाँ पे देखो ये बूट हुआ था यहाँ पे। ओके, सो फायरवॉल यहाँ पे बूट हो चुका है लेटेस्ट में। नाउ पिंग तो रीचेबल, ये एक बार टेलनेट करते हैं, ठीक है। टेलनेट 192.168.5.10 ओके, देखो टेलनेट भी हो रहा है, दैट मीन्स फायरवॉल इज अप एंड रनिंग। ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, फायरवॉल एक्सेस आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन ऑन आवर लैपटॉप। लैपटॉप पे कैसे करेंगे, VMware से, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन प्रो, मेरे पास तो 16 है, लेटेस्ट डाउनलोड कर लेना 17, और 17 इंस्टॉल हो जाए तो सेम स्टेप फॉलो करना है, डाउनलोड करना है OVF फाइल, यानी आपका जो फ्री वर्जन है जिप फाइल डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और OVF फाइल होगा आपका यहाँ पे। ओके, Sophos OVF, यू हैव टू इंस्टॉल दिस। ओके, तो नाउ अभी ये फाइल कहाँ पे है, मेरे लैपटॉप पे, राइट। मैं अपने ब्राउजर पे एक्सेस कर रहा हूँ। नाउ लेट मी लॉग इन, इफ आई पुट द राइट पासवर्ड, सपोज, या ओके, नाउ पुटी ले लेते हैं इसका, चलो। इफ आई टाइप 192.168.5.10, ओके, तो पुटी आना चाहिए। ओके, तो आ गया, एक्सेप्ट, एंड तो देखो CLI भी है और मेरे पास GUI भी है। लेट मी लॉग इन, पासवर्ड डालते हैं। ओके, सो आई एम ऑन द CLI नाउ। अभी करते हैं, लेट्स से ऑप्शन नंबर 4, CLI पे जाना है, देखते हैं ट्रैफिक किसका कहाँ से जा रहा है। ओके, तो अगर मैं अपने PC से पिंग करूँ 8.8.8.8 कंटिन्यूस पिंग, ठीक है, 8.8 पिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है कि नहीं, लेट्स सी। सो व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ दिस PC, 101। ओके, जो मेरे PC का IP है उसका IP क्या है, 101, ये रहा। ओके, फायरवॉल है 10 और इसको मैंने 101 दिया है, और मैं फायरवॉल को पिंग कर पा रहा हूँ, राइट। और मैं अभी कर रहा हूँ पिंग 8.8 को, तो ट्रैफिक फायरवॉल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा, तो TCP डम्प से पता चलेगा, राइट। सो TCP डम्प होस्ट के बाद आपको एंटर के बाद आपको एपोस्ट्रोफी साइन लगाना पड़ेगा, एंड होस्ट स्पेस 8.8.8 एंड प्रोटो ICMP पैकेट्स। ओके, तो मैं फिल्टर कर रहा हूँ, इस कमांड का मतलब क्या है कि मुझे डम्स पता हो, अगर कोई भी, अगर इसका ये होस्ट का ट्रैफिक जा रहा है, ओके, और पर्टिकुलरली मुझे पिंग कर रहा है उसका ट्रैफिक चाहिए, मैंने फिल्टर किया इधर,
ठीक है, सो जस्ट प्रेस एंटर। ओके, देखते हैं यहाँ से अभी हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ट्रैफिक फाउल से नहीं जा रहा है, ट्रैफिक मेरा जा रहा है। देखते हैं, ट्रेस करो 192.168, सॉरी 8.8.8। ओके, सो देखो यहाँ ये मेरा 101 से जा रहा है, फावल तो आ ही नहीं रहा है, कोई 192 तो है ही नहीं इधर। ओके, सो आई कैन सी ट्रैफिक इज गोइंग ऑन माय वाईफाई राउटर, ये मेरा वाईफाई राउटर है। ओके, अभी सोफोस से जाते हैं, मेरा लैपटॉप का जो ट्रैफिक है सोफोस से जाने देते हैं, तो क्या है कि मैं स्कैन कर पाऊंगा, ठीक है, फावल से। सो लेट मी लॉग इन ऑन फावल। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सोफोस एज ए वेब प्रॉक्सी। तो यहाँ पे अगर हम लैपटॉप पे मैं अगर प्रॉक्सी लिखूं, तो प्रॉक्सी सेटिंग्स शायद मुझे दिखनी चाहिए। ओके, सो आई कैन सी प्रॉक्सी, एंड देखो यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप करके ऑप्शन होगा। ओके, और देखो मैंने एक टेस्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। सो मेरे फाइल का आईपी है, जो सोफोस का फाइल का आईपी है उसको देना है आपके पीसी पे, या फिर ब्राउजर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लोबली हो जाएगी, यानी कोई भी ब्राउजर पे यही सेम प्रॉक्सी सेटिंग्स रहेगी आपकी। और जो फाइल का प्रॉक्सी पोर्ट है वो, उसको आपको याद रखना है 3128। ओके, तो 3128 प्रॉक्सी पोर्ट नंबर है फाइल का, अगर आप अगर फाइल एज ए प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो। ओके, तो जब ब्राउजर में सेटिंग्स डालो तो भी आप सेम डाल सकते हो, अदरवाइज ग्लोबली आप डाल सकते हो, इट्स फाइन। ओके, क्लिक ऑन सेव एंड नाउ सी। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो इफ आई पिंग, ट्रेसर करते चलो। ओके, सो इट्स गोइंग ऑन माय router still. Let's see if I can route the traffic. 3218, okay. Okay, settings तो proper है, traffic आना चाहिए इधर। Before that, let's see if I can make that happen. Suppose एक बार सिक्योर स्टोरेज मास्टर की अगर आ रहा है तो सेव कर लो। Yes, I have and create. Okay, so now I have access to the firewall. Sophos पे मेरे लैपटॉप पे एक्सेस है, राइट। नाउ लेट्स मूव द ट्रैफिक। अभी यहाँ से जाने देते हैं इफ इट इज पॉसिबल। सो व्हाई इट इज नॉट गोइंग, इफ आई गो टू वेब, प्रोटेक्ट वेब पे जाते हैं, एंड यू कैन सी जनरल सेटिंग, यहाँ पे आना है। ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड लेट्स सी हियर। ओके, सो ये देखो यार, आपका प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, आपको पोर्ट चेंज करना है तो कर सकते हो। ओके, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 3128 है यहाँ पे। Okay, and these ports are allowed, TLS, okay, fine. I hope we don't get disconnected. Let me see. Okay, I have to disable some settings, so I will not do it around, otherwise we'll get disconnected. What can we do? Well, let's go to the firewall rules and check. देखते हैं वो firewall rules. Okay, so here is that firewall rule, default network policy, जो automatic create हुई है, right? This is the default rule for internet and default net rule. This one, default SNet, ये automatic create हो जाएगा, all right? So now let's go and check why it should work actually. Epoxy settings डालने से ये चलना चाहिए। एक बार enable disable करके देखते हैं। Okay, so let me try back if I can use proxy settings.
So I will ping the PC first, 192.168.5.101. Okay, that is reachable. Now let me check अभी traffic वहाँ से route करवाते हैं. So I think that is the setting. It should work. No, still not. Traffic is not coming. That means it is not taking. Okay, so traffic यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो use नहीं हो रहा है. So let me try somewhere else if I can. Browser पे एक बार set करके देख लेते हैं. So if I go to settings and type proxy. So I will use system manual proxy and I will type 192.168.5.10 and the port is 3128. Okay, तो ये default port है. Alright, नहीं पता है तो एक बार maybe verify करना है कहाँ से, protect web and general settings and scroll down and you will find it here. 3128 protect web and general settings. So you don't make any changes, it's fine, but just to run this. Okay, so let me click on OK if I can route the traffic. No, still not, means it's not taking. Okay, so configuration the proper, all right. Okay, might be the setting with the adapters. Let me re-verify everything. Properties. Let's see. Okay, bridge. All right, this is fine. Okay, VM settings. Let's look into the VM settings. Okay, if it doesn't work, no worries. We will do it something. We'll fix it later on. As of now, it's fine. Okay, this look good. Let me turn on and turn on back. Save it. Okay, let me save it. No, it's not taking. Let me check. Drop. If it is not drop, it is not dropping. It is traffic is not hitting. Traffic ही hit नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं चलेगा. Okay, so configuration तो ये, it's not working. That's it. From the system end, maybe system में ही कुछ issue है. Yeah, apart from this, you will not find any other settings. Browser पे भी डाल के देखा, but it's fine. चलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं इसको. Alright, so एक चीज है. Let's see if I check TCP dump host 192.168.5.101 and proto ICMP. Yeah. Now let me ping firewall. Six 8.5.10. Okay, so I can see traffic is coming. Okay. So before we begin with the web proxy, no worries. Let's understand the traffic flow. Let me just ping. वापिस एक बार ping करते हैं. Alright, बाद में lab पे आते हैं. So I'm pinging firewall. Okay, अभी LAN पे ही है. So I am doing ping to the firewall from 501. 101 पे ping कर रहा हूँ मैं. Okay, so I 4 पैकेट्स मैंने यहाँ पे भेजे हैं. Alright. So these are the 4 packets. ओके तो फावल पे जनरली जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा इन एंड आउट होगा. ओके सो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स से दिस पैकेट, द फर्स्ट दिस पैकेट. ऑलराइट, तो ये पैकेट पहले इन आ रहा है. ऑलराइट,
you can see time and number of packet. All right, and then that is port A, इन पैकेट है यहाँ पे. ओके, और जो सोर्स आईपी है ये आपका सोर्स आईपी रहेगा, जो मेरे सिस्टम का आईपी है, राइट, 192.168.5.101. और डेस्टिनेशन अभी मैंने यहाँ से जो पिंग मारा उसका जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है, 10. एंड दिस इज आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट. ओके, सो आईसीएमपी हमने पढ़ा है, राइट, दैट इज अ प्रोटोकॉल. ऑलराइट, सो यहाँ पे 0 और टाइप 0 और 8 रहेगा. सो देर आर मल्टीपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस आईसीएमपी अगर जिनको डिटेल में पढ़ना है, और जिन्होंने पढ़ा है सो यू माइट नो हाउ इट वर्क्स. ओके, तो यहाँ पे पता चलेगा कैसे वर्क करेगा. सो यू कैन सी दिस 2 पैकेट्स जनरली. ओके, तो ये 2 पैकेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं आपका वर्किंग कंडीशन में. राइट, सो पैकेट इन आ रहा है, मीन्स पहले तो ट्रैफिक आ रहा है. जैसा अभी मैंने वेब प्रॉक्सी किया था तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था, राइट, तो कुछ इश्यू है, राइट. पर मैंने जब पिंग किया तब मेरा यहाँ पे पैकेट देखो इन हो रहा है. ऑलराइट, सो इट इज गेटिंग इन, तो यानी एटलीस्ट ट्रैफिक आ रहा है, हिट कर रहा है मुझे. सो वी विल सी इन एंड आउट, जो इनग्रेज इग्रेज और इंग्रेज होता है, राइट, ट्रैफिक वही है हमारा यहाँ पे. सो वी विल अंडरस्टैंड द इन एंड आउट ऑफ द फायरवॉल. तो पहले हम यहाँ से चेक करते हैं. सो पोर्ट ए से मैंने पीसी से पिंग किया फायरवॉल को, तो मेरा इको रिक्वेस्ट यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ एंड इट रीचेस द फायरवॉल. फिर फायरवॉल ने उसको रिप्लाई भी किया, राइट, सो दैट्स द रीजन आई कैन सी आउट पैकेट 5.10. उसने रिप्लाई किया किसको, 102, और दिस इज द इको रिप्लाई. तो जो रिक्वेस्ट पैकेट था ये, और ये था रिप्लाई पैकेट मिला मुझे, राइट, और followed by sequence number, length number, and so on. So this way you will see the communication on the firewall. Okay, in and out. तो जैसे इन आ रहा है वो वैसे प्रोसेस रखे उसको आउट पे भेजेगा. तो लेट्स से अगर इंटरनेट पे भेजा मैंने पोर्ट बी पे, तो पोर्ट ए से ट्रैफिक आएगा यहाँ पे. ओके, देन पोर्ट बी उसको आउट करेगा, फिर पोर्ट बी से उसका ट्रैफिक इन आएगा. ओके, एंड पोर्ट ए से वो आउट करेगा. तो ऐसे 4 पैकेट्स होंगे आपके यहाँ पे. Alright, similarly to this. So this way this is the first packet that you are learning here, in and out. Okay, तो कैसे वो in होगा and कैसे वो out होगा. तो ये वैसे कितने पैकेट्स भेजे, 4. ओके, तो टोटल आई थिंक 8 पैकेट्स होंगे, इन आउट इन आउट इन आउट. ऑलराइट, अगर लेट्स से मैंने पिंग किया और पिंग नहीं लगा. ओके, लेट्स से आपने तो इधर जैसे टीसीपी डम चालू रखा है एंड आपको यू डिडंट रिसीव द पैकेट ऑन द फायरवॉल, दैट मीन्स कुछ इशू है, नॉट ऑन द फायरवॉल बट जैसे कि स्विच हो सकता है बीच में. ऑलराइट, या फिर प्रॉपर सेटिंग्स नहीं हो सकती है, तो दैट इज द रीजन ट्रैफिक हिट ही नहीं हो रहा है फायरवॉल पे. लेट्स से ट्रैफिक हिट हुआ. ओके, ट्रैफिक हिट हुआ, इन पैकेट आया बट आउट नहीं भेज रहा है, तो हो सकता है फायरवॉल का इशू है. यस, मे बी कहीं पे आपका कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है टू सेंड दैट पैकेट आउट फ्रॉम पर्टिकुलर इंटरफेस. तो जैसे हम अभी लैब पे स्क्रैच से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यही हम पैकेट फ्लो देखेंगे कि कैसे वो अगर नहीं चल रहा है, इन दैट केस वी विल सी द फ्लो. तो नहीं चलेगा तब उसके बाद हम देखेंगे. ऑलराइट, सो इन दिस वे वी कैन ट्रबल शूट एंड वी नो द पैकेट फ्लो ऑफ ऑन द फायरवॉल. कैसे ये होता है, जैसे कि आईसीएमपी पैकेट्स कैसे लाइव में है वो देखा, राइट, कैसे रिक्वेस्ट भेजा और रिक्वेस्ट रिप्लाई वापस मुझे मिला. उससे पहले हमने क्या देखा था, 3-way हैंडशेक, राइट. So this way we have checked the 3-way handshake. All right, and I don't think why this one is not working. Generally ये setting करके देखना आपके लैपटॉप में and let me know if it is working या फिर नहीं वर्क कर रहा है देखो. But this is the only settings. आपको क्या करना है, जो फायरवॉल का जो आईपी है, ठीक है, एक बार फायरवॉल इंस्टॉल हो जाए यहाँ पे, तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स लिखो पीसी पे, तो आपको सेटिंग्स आ जाएगी यहाँ पे प्रॉक्सी करके. ऑलराइट, एंड सेटअप प्रॉक्सी सर्वर, तो जो भी प्रॉक्सी सर्वर अपना फायरवॉल है, ठीक है, तो उसको सेटअप करो यहाँ पे एंड सी वेदर इट इज वर्किंग ऑन योर सिस्टम और नॉट. ऑलराइट, एंड लेट मी नो. ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग. आई विल just shut down this VM and I will go back to the labs first. Okay, आपको इंस्टॉल करना है and let me know. Okay, so close this and let me just go to the lab.
Okay, you can see the lab, right? Okay, let me just log in here. तो पूरा जो लैब है हम वो स्क्रैच से ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, आज से ही. सो द अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे हमारे पास दो आईएसपीज होंगे, ठीक है. सो दो आईएसपीज कॉन्फ़िगर करेंगे. एमपीएलएस, वी विल कॉन्फ़िगर एमपीएलएस कनेक्टिविटी बिटवीन हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफिस, एंड वी विल कॉन्फ़िगर फेलोवर, आईपीसेक फेलोवर कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड फेलोवर बिटवीन द एमपीएलएस. बट उससे पहले सारा इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे. ऑलराइट, एंड वी विल सी द पैकेट फ्लो. तो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हम देखते हैं. इफ आई कैन हैव द एक्सेस, गिव मी अ मोमेंट. ओके, व्हाट आई विल डू, ओके, लेट मी ओपन दिस पीसी एंड सी व्हाट इज द स्टेटस क्या है इस पे. Okay, let me just log in on the labs. Okay. Okay, you can see the screen. ओके, तो अभी क्या है, देखते हैं फाइल का स्टेटस क्या है. एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर वी विल रजिस्टर इट एंड सो ऑन. अगर रजिस्टर है तो इसको भी रजिस्टर करते हैं. ऑलराइट, इसको रजिस्टर किए बिना, लेट्स से इफ आई कैन, लेट मी पुट सम पीसी हियर, नोड एंड विंडोज. लेट मी पुट विंडोज हियर. ऑलराइट, सो एक विंडो भी डाल देते हैं तभी, इसको भी टर्न ऑन कर देते हैं. ओके, सो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे लेग कॉन्फ़िगर करते हैं एंड यहाँ पे ब्रिज इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे आज. ऑलराइट, सो लेट अस टर्न ऑन द स्विचेस, दोनों स्विच ऑन कर देते हैं. एंड लेट मी ओपन दिस स्विच, द फर्स्ट स्विच, स्विच वन, एंड इसका नाम है स्विच वन एंड इसका नाम है सिफ स्विच. ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर दिस एज ऑफ नाउ. Okay, so wait for a while, it will come up. Okay. Okay, let me check the setting of this PC. So IP config. Okay, so I will ping firewall 172.16.16.16. Okay, the firewall is reachable. Okay, so browser open करते हैं. Okay, तो ये कौन सी साइट पे वो देख लेते हैं पहले. तो ये वाला साइट पहले कॉन्फ़िगर करते हैं. So let me click on this PC. Okay, this one leave it as it is. Let me just go to this PC. Okay, तो ये हमारा होगा branch office and this would be your head office. So let's configure the branch office and we will configure the head office similar way. दोनों same way से configure करेंगे. Alright, so we will begin with the packet flow. तो bridge configure करेंगे and lag configuration करते हैं. Alright, so क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पे, पोर्ट A और F and port E and D. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस एज अ लैग. और इसको हम डीएमजी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएमजी जोन, और इसको लैंड जोन कॉन्फ़िगर करते हैं. ऑलराइट, यू कैन फिर इसको आप कैसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्टेप्स सेम रहेंगे. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट लॉग इनटू द पीसी. फाइल एक्सेस कर लेते हैं एक बार. ऑलराइट, और थोड़ा बेसिक सेटअप कर लेना, लाइक अगर पीसी का टाइम अलग है तो रजिस्टर कर रहे हो तो चेंज कर लो. Alright, I will restart it later. So first thing first, let's do the time settings. Okay, I will change the zone. It's fine. ये तो सब basic है. So yes, okay, and click on okay. Okay, so it's done, I think.
Okay. Okay, so this is not a part of the courses, of course. So time is like 07. Okay. Now open the browser. Okay, and open CMD also. CMD भी open करो and see what is the current status. All right, yeah. So we have the access of the firewall. Okay, the ping हो रहा है. So let me just browse it. Let me change the screen. All right, so let me just type the IP now. अगर रजिस्टर्ड नहीं तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा. रजिस्टर किए बिना हम कॉन्फ़िगर करते हैं. लेट्स सी. 172.16.16 :4444. Okay, so click on advanced. Okay, so ये देखो ये आपका कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, राइट. सो कोई भी फायरवॉल एक्सेस करेंगे तो आपको ये एरर आएगा बिकॉज यू आर एक्सेसिंग विद द आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ये जो इसका जो सर्टिफिकेट है वो ब्राउजर के पास है ही नहीं ट्रस्ट करने के लिए, राइट. इट इज नॉट ट्रस्टिंग. दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग दिस एरर. सो वी हैव फिक्स दिस, राइट. वापस फिक्स करेंगे, राइट, क्योंकि लैब पूरा स्क्रैच से ही करेंगे. हाँ, अगर मीन स्क्रैच से करना पड़ रहा है, लैब का क्रैश होती है या फिर अगर कुछ, then yes, of course we have to do the same steps. Next time I will not be showing, don't worry. Or always it will be registered firewall only. Registered होगी firewall, so we don't have to wait for वापिस उसको रजिस्टर करना एंड सो ऑन. बट क्योंकि सबको भी रजिस्टर करना तो आगे, राइट. इट इज सिंपल. ना वो भी देखेंगे रजिस्टर नहीं करना है, ऑलराइट, एंड सी what will it will be happening if we are not registering the firewall. All right, so let me just go to the firewall if I can. All right, I will stop these nodes. I don't need this as of now. Okay, so इतना पार्टी करते हैं. I think it is asking for initial setup wizard. तो वापिस ये lab पूरा actually crash किया था, so I just restart the lab from scratch. All right, meanwhile ये आ रहा है, तब तक क्या करते हैं. ये हमारा पोर्ट ए और एफ, that means /00/00 and 0/2 are my bridge port. Both are my bridge port. So switch number 1. स्विच में पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करना है, ऑलराइट. सो वी विल कॉन्फ़िगर चैनल पोर्ट, ट्रंक पोर्ट से करते हैं, ऑलराइट. एंड दूसरा जो LSCP है वो हम करेंगे with the non-switch port. Okay, that is fine. Okay, maybe the issue is, as of now, let me just remove this. Okay, the simple है. Firewall port A से, then switch, then we have switch. Firewall, switch and PC. Simple setup.
if it is possible. Okay, so again, registered. I will not register the firewall, but I will just boot it. So what I will do, यहाँ पे जो पोर्ट बी है, ठीक है, उसको मैं सस्पेंड कर देता हूँ. Otherwise, it will start downloading the latest firmware version. All right, it might take some time, so I will save it. Okay, so again, go to setup wizard and put the password. Click on continue. Okay, same step हो गया जो अभी हमने follow किया था laptop पे, right? So you can use the firewall on the laptop for navigation purpose, also for yes, आप ट्रैफिक वहां से जाने देख सकते हो, जो सेटिंग्स मैंने बताई वो चलेगा. All right, I will see on my laptop where I have not missed anything, but yes, of course, might be some other settings might has to be enabled. Okay, तो continue with above offline इसको continue करो. All right, warning message आएगा, it's fine. Click on continue. All right, and just give the name. Okay, so ये मेरा branch office है, so branch office नाम दे दो GuiNet. Okay, again time zone and continue. ओके, सो लाइसेंस बताएगा. ओके, डैश इट्स फाइन, वो बाद में ले लेते हैं. क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगर इसका नेटवर्क चेंज करना है तो आप अभी से ही कर सकते हो, इट्स फाइन. लेट मी चेंज इट टू 172.16.17.16. ठीक है, तो मैंने 17 लिया है ऑक्टेट. और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 17 ऑटोमेटिक शायद आ जाएगा. ये सी, आई डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, बट इट विल कम ऑटोमेटिकली. So 17 से start होगा. All right, if you want you can change. Okay, तो ये मेरा DHCP सेटिंग रहेगा. मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया. All right, अब यहाँ से भी कर सकते हो ऑटोमेटिकली, फिर IP भी मिल जाएगा यहाँ पे. ओके, क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगर यहाँ पे DHCP एनेबल नहीं किया तो आपको मैनुअली IP देना पड़ेगा. ठीक है, PC पे. Now simply click on continue. Don't make any other changes. It's fine. Don't mean to tick mark anything. Click on continue. And backup notification wala page wapis, right? So just enter any email address. Okay, and paste that email address back. Untick that is fine. Continue. Okay, and summary. So एक बार boot होगा, इसको boot होने देते हैं. So एक continuous ping रख दो, जैसे मैंने लैपटॉप पे रखा वही सेम स्टेप्स है. ओके, continuous ping. सो पता चलेगा बीच में अगर वो बूट होके वापस आ रहा है तो आपको आइडिया आ जाएगा. ऑलराइट, सो इट्स इजी. Okay, so now it's booting. We will wait for 2 to 3 minutes. Meanwhile, switch पे आते हैं. ठीक है, ओके. नाउ हम यहाँ पे करेंगे ब्रिज. ओके, तो पोर्ट F यूज करेंगे, इट्स फाइन. एंड यहाँ पे तो LHCP है, सो LHCP करेंगे. नाउ लेट्स मी जस्ट गो टू switch 1. switch 1, here it is. अभी एक सेकेंड ऐसा करते हैं, यहाँ पे आ जाता है. I hope you can see the screen. Okay, now let's configure something. Like let me just check config T. Okay, so I will execute some basic switch command. All right, so no IP domain lookup. Now what I will do, I will use port
02 और 001 है, ठीक है। तो वो दो स्विच वो मैं यूज करूंगा और एज अ ब्रिज, तो पोर्ट चैनल क्रिएट करूंगा यहाँ पे मैं। सो आई कैन क्रिएट इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 and I will type switch port trunk encapsulate .q1 switch port mode trunk switch trunk allow VLAN. Okay, allow VLAN. Okay, so this is fine. Now what I will do on interface range use करूँगा 0/1 sorry 0/0. Okay, so 0/0, then I will put comma GI0/2 if I'm not wrong. Okay, so switch port I will make it trunk again, so it will be switch. Okay, switch port trunk encapsulate dot and switch mode trunk, and I will allow all the VLANs. It's fine. All right, so and let me save it. It's fine. So let me show you the settings, what I did. So show run. If I show you the configuration and port channel details, what I did, I configured port channel 1. I trunked the port channel also. I trunk 00 and 0/2. Okay, so I've just used the trunk. All right, it's done. Now firewall status is not up yet. हेलो 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 Okay, meanwhile यहाँ पे LSCP कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, चलो कोई बात नहीं है ना, इसको टर्न ऑन कर देते हैं। इज VPC। Okay, let's take, I think in a moment the firewall will come up. Okay, firewall थोड़ी देर में आ जाएगा, पिंग थोड़ी देर में देखते हैं। ओके, तब तक हम जाते हैं स्विच, ये वाला स्विच है। ऑलराइट, सो इट्स हियर. So next is let me just reconnect. Okay, so enable it. Config T, no IP domain lookup. ओके, डोंट ये इग्नोर करो इस कमांड को, डोंट वरी. सो हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट जैसे यूज किया, राइट, 2 पोर्ट ब्रिज कर दी यहाँ पे मैंने. ऑलराइट, सिमिलरली हम यहाँ पे LSCP चलाएंगे. यहाँ पे LSCP नहीं चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीधा मैं ब्रिज कर रहा हूँ, ब्रिज इंटरफेस, राइट, और LSCP. सो ये दो आज ही हो जाएगा. सो लेट्स कॉन्फ़िगर LSCP हियर ऑन 0 and 1. Okay, 00 gig 00 and 01. So what I will do, I will first configure the port channel interface port channel 1. वहाँ पे इस तरफ है तो 1. You can take any port channel, it's fine. Then this is not a switch port. Okay, मैं इसको IP address दे देते हैं. So I will give the IP address. So IP address 192.168.60.2. ओके, 2 में स्विच को देता हूँ, इसको मैं 1 दूंगा एंड इसको मैं 2 देता हूँ. चलो, सो 255.255.255.0. ओके, देन एग्जिट. Then what you can configure, you can go to interface range gig 0/0/0/1. Okay, so go to this range, दोनों इंटरफेस में जा रहा हूँ. Then I will configure no switch port. I will configure this interface as no switch port, no, then no IP address. Okay, दो कमांड चला है, no switch port and no IP address. But channel group 1 mode. Okay,
use on. Okay, this is the command, use this one. So this is done. Now what I will do, I will just simply and okay, show IP interface brief. ऑलराइट, तो पोर्ट चैनल मैंने कॉन्फ़िगर किया है। ओके, और ये दो पोर्ट यूज कर रहा हूँ मैं, 0 और 0/0, 0/1, और 0/2 है वो मेरा ये पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे वीपीसी टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, इफ आई शो यू कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो पोर्ट चैनल नो स्विच पोर्ट ये वाली स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस दिया हुआ है मैंने इसको, एंड ये जो इंटरफेस है मेरे, ठीक है, वो LSCP है। सो दिस इज एक्ट एज अ LSCP। ऑलराइट, सो इट्स डन, एंड ओके, दिस इज इनफ एज ऑफ नाउ। एंड ऑन दिस स्विच मैंने यहाँ पे ट्रंक यूज किया है। ओके, तो मैंने पोर्ट 0/0/0, 0/2 यूज किया है, 1 यहाँ पे यूज है, तो आप अपने लैब पे इसको इंटरचेंज कर सकते हो और इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट्स फाइन। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द फायरवॉल। व्हाट इज द स्टेटस देयर? अभी तक नहीं है पिन। ओके प्लीज, ओके, इथरनेट चैनल ये नहीं चलेगा ना क्योंकि सामने। ओके, लेट मी रन शो इथर, शो इथर channel summary. Okay, it's showing me active here. मैंने तो I don't know why. Okay, strange. Okay, इस साइड भी रन करके देख लेते हैं। Show third channel summary. Okay, so यहाँ पे अभी तक वो पोर्ट्स नहीं आए, so I think it is down. Okay, जैसे अप करेंगे तो आ जाएगा वो तो, but यहाँ हेलो पे हेलो I can see हेलो हेलो it is past active. Okay, it is active actually. Yeah, it's working. Okay, Ritesh, done. Now let's see the working. Okay, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे हमने ब्रिज किया और यहाँ पे हमने LSCP किया, राइट। फॉर रिडंडेंसी, अगर एक लिंक फेल होगा तो फिर दूसरे लिंक से जाना चाहिए, अगर ये लिंक फेल होता है इससे जाना चाहिए, या फिर लोड बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर दोनों एक्टिव है तो लोड बैलेंसिंग भी रख सकते हो, प्रायोरिटीज भी दे सकते हो, एंड सो ऑन। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, बट ये ऑफ कोर्स देखो कि आपको क्या रखना है। ऑलराइट, so I can see it is working. Let's go to the firewall and do some test then. Okay, तो अभी शायद मुझे DHCP से IP नहीं मिल रहा है, राइट। मैंने इसका तो चेंज किया है, सो IP config। ओके, सो आई थिंक IP नहीं मिला, राइट। चेंज किया था 17। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जूम करते हैं, और जो फायरवॉल है उसका कंसोल ले लेते हैं। नेटवर्क चेंज किया था, राइट, और मैं पिंग कर रहा हूँ 16 को, तो कहाँ से होगा। ओके, सो लेट मी एंटर दी पासवर्ड। ओके, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डिवाइस सभी रजिस्टर्ड तो नहीं है, राइट, बट यस देखो अभी 17 वाला है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पे IP उसने उठाया नहीं, उसकी वजह से वो पिंग नहीं हो रहा है, तो मैनुअली जाके चेंज कर देते हैं। ओके, गो टू नेटवर्क सेटिंग्स। ओके, कनेक्ट टू नेटवर्क एडेप्टर्स। ओके, स्टेटस नेटवर्क एडेप्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, मैन्युअली कर देते हैं, वो DHCP से आया नहीं तो, जैसे कि ये भी एक ट्रबल शूट का ही पार्ट है। ओके, वो बाद में देखेंगे क्यों नहीं है, पहले बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं। सो 17 है, राइट, 17, और मैं इसको देता हूँ 100। सो 255 255 255 और 172 16 17 16। ओके, DNSP दे ही देते हैं। ओके, एंड प्रेस ओके, एंड अभी पिंग चेक करते हैं, चलो।
Okay, let's see. सीधा एक्सेस करते हो, राइट? सो इट्स डन। फायरवॉल तो आ ही जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, उतना भी नहीं लगेगा। सो आई विल, इफ आई पिंग 170.16, ऑलराइट, ओके, लीव, लेट्स गो टू द फायरवॉल नाउ। और ब्रिज कॉन्फ़िगर करते हैं, ब्रिज और एलएससीपी कर लेते हैं आज, ऑलराइट। ओके, तो स्विच साइड हो गया हमारा, राइट? स्विच साइड तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, अभी है फायरवॉल के साइड कॉन्फ़िगर करना है। ओके, सो ओके, शो इथर चैनल समरी। ओके रितेश, दोनों साइड रख देते हैं। शो इथर चैनल समरी। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, लेट्स सी। इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने उसको पोर्ट चैनल में नहीं डाला ना, उसकी वजह से नहीं आएगा इधर। हेलो हेलो। लेट्स सी, आई हैव पुट, ओके नहीं डाला है ना उसमें। ओके, तो डाल देते हैं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/0 डैश, ओके, GI 0/2, और रेंज में डाल देते हैं इसको, राइट? इसको मैंने पोर्ट चैनल नहीं किया था। सो चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, ठीक है, एंड ओके, और इसका राइट कर देते हैं एंड लेट्स सी। देखो पोर्ट चैनल अप आ गया, राइट? सो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिक हो गया। नहीं, शो इथर चैनल समरी। ओके, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया, ये भी एक्टिव एक्टिव ही बता रहा है। ओके, SU यानी सेकेंड लेयर पे है, ये ब्रिज है उसलिए, और दूसरा जो था वो मैंने लेयर 3 पे किया, राइट? राउटिंग किया, मीन्स मैंने उसको IP दिया। सो या, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। नाउ लेट्स गो टू द फायरवॉल, और अगर नया पूछे तो ये दे ही दो, राइट? सो आई विल जस्ट पुट इट क्विकली। ओके, सेव इट, क्रिएट। अभी जाना है नेटवर्क पे, ऑलराइट। सो लेट्स गो टू नेटवर्क। अभी हमने पढ़ा था सारे ब्रिजेस, राइट? स्विच इज ऑल्सो इन ऑन मोड, हाँ दोनों ऑन मोड रखना है। आप अपना हिसाब से जो भी मोड है वो रख सकते हो, ऑलराइट। एज ऑफ नाउ जस्ट कीप इट ऑन, या रितेश, we'll see other modes, okay, and we'll discuss also, but as of now just keep what I have set. All right, now अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, पोर्ट A, ओके, पोर्ट A जो है वो मेरा रहेगा ब्रिज ANF। okay, what I will do, I will do something else. What I will do, I will connect another one, पोर्ट F था ना, हाँ तो G कर लेते हैं। so it is on 3। ओके, स्विच में जाके पोर्ट G और F यूज करते हैं एज अ ब्रिज। सो पोर्ट 3 जो है वो यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, सो आई विल जस्ट config T interface GI03 switch port trunk mode trunk, and we will use it's fine, that is fine, and channel group 1 mode on, yeah, keep this, and config T default। ओके, जो मैं ये जो है वो यूज नहीं करूंगा, पोर्ट A यूज नहीं करूंगा, 0/0। ओके, सो 0/0 GI 0/0। ओके, सो वो मैंने डिफॉल्ट कर दिया। सो लेट्स चेक व्हाट इज द सेटिंग्स फर्स्ट। ओके, ब्रिज चेक कर रहे हैं पहले, सबसे पहले। सो या, मैं 3 और 2 यूज कर रहा हूँ। ओके, ये दो पोर्ट यूज कर रहा हूँ मैं अभी।
ये मेरा ब्रिज रहेगा, ब्रिज कर रहा हूँ और इसमें एक नेटवर्क चलाते हैं। ऑलराइट, और वो जो ए है वो हम मैनेजमेंट पोर्ट, मैनेजमेंट नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, इट्स फाइन। पोर्ट चैनल 1 एंड दिस इज योर सेटिंग्स ऑन दी। ये आपका यही कमांड रन कर देना, ऑलराइट, टू चेक दैट whether it is working or not. So let's check the status of the Ethernet channel. Show third channel summary. Okay, so port 2 and 3, ठीक है, पैसिव पैसिव, ओके फाइन। अभी जाते फाइवल पे। ऑलराइट, तो पोर्ट में यूज करूंगा कौन सा, एफ और जी, दो यूज करेंगे हम। तो ऐड इंटरफेस, अभी देखो ऐड ब्रिज, एलियस, वीलन, लैग एंड रेड, सो सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वन बाय वन। सो ब्रिज और लैग कर रहे हैं, वीलन भी करेंगे, एलियस भी करेंगे, सब कॉन्फ़िगर करके टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, सो नाम दे दो लाइक BR0, कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, सो लेट्स से BR0। अगर आपको राउटिंग एनेबल करना है तो आप एनेबल करो, अदरवाइज इट्स फाइन। ओके, लेयर 3 चलाना है तो लेयर 3 चलाना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव एज इट इज। और एफ पोर्ट सिलेक्ट करना है। ओके, और ये मेरा होगा डीएम, आप इसको कुछ भी कर सकते हो, जो जोन है डीएमजी करना है तो डीएमजी कर दो। ओके, दोनों डीएमजी पोर्ट है, यानी एक डीएमजी नेटवर्क है, यहाँ पे आपके सर्वर्स डाल दो। ओके, सो सर हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी कर सकते हो एंड सो ऑन। और आप कस्टम जोन भी डाल सकते हो, कस्टम जोन क्रिएट करके। ओके, लैंड करते हैं वहाँ पे डीएमजी डालते हैं अपन, चलो यहाँ पे लैंड करते हैं। ओके, सो दिस इज लैंड। ऑलराइट, सो इट्स डन। और क्या करेंगे, वी विल एनेबल IPv4, इसको एक नेटवर्क दे देते हैं। सो लेट्स से 172.16.18.16। ओके, ये वाला नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क आपके हिसाब से दे सकते हो। एंड ये रेस्ट एडवांस सेटिंग्स बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो जस्ट सेव। ओके, ऐड इंटरफेस, ऐड ब्रिज। ओके, जो इंटरफेस है उसके बारे में बोला है, इफ यू आर जस्ट अपडेटिंग it will remove some configuration, or if you are selecting existing interface तो वो देखेंगे कैसे करेंगे, but as of now add bridge। कोई बात नहीं, हाँ वो अलाउ कर देते हैं, ट्रंक अलाउ और सारे विलेन बाय डिफॉल्ट अलाउड हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, तो देखो ब्रिज यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। सो यू कैन सी ब्रिज, क्लिक हियर। तो देखो आइकन चेंज हो गया, पहला दो आइकन तो है हमारे पास, एक तो वाईफाई का है यहाँ पे, ओके, विच वी हैव स्टडीड। देन इथरनेट जो लोकल फिजिकल पोर्ट्स है उसका ऑरेंज जैसा रहेगा, राइट। एंड जो ब्रिज किया हमने पोर्ट F, उसको मैंने ब्रिज कर दिया है, ऑलराइट, और उसका नेटवर्क की है। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर DHCP। ओके, लेट्स सी DHCP। ओके, क्लिक ऑन ऐड। ओके, एंड आई विल टाइप ब्रिज 0 नाम दे दो, और जो इंटरफेस है, ठीक है, तो ब्रिज 0 कॉन्फ़िगर किया था उसको सिलेक्ट करना है, इंटरफेस जिस इंटरफेस पे DHCP रन करना है, राइट, सिर्फ उसको सिलेक्ट करो। और यहाँ पे वो रेंज दे दो, आपको जो रेंज देना है वो फिर हम एक्सक्लूड वाला देखेंगे बाद में, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर करना है तो। सो आई विल यूज दिस रेंज। ओके, और बाकी स्टैटिक IP देना, इट्स फाइन। डोमेन है तो डोमेन दे दो, इट्स फाइन। लीव दिस सेटिंग्स एज इट इज। कॉन्फ़िग डिटेक्शन एनेबल कर सकते हो, इट्स फाइन। DNS फायरवॉल यूज करना है तो अगर आपने DNS यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ओके, सो यू कैन यूज दैट DNS, इट्स फाइन। और आप खुद का भी DNS डाल सकते हो, चलो। ओके, सो secondary is 1.1.1। ओके, एंड सिंपली सेव इट, तो आपका DHCP सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, सो इट्स लेट मी कॉन्फ़िगर 25। ओके, व्हाट हैपेंड, IP ओके range, सॉरी, इट्स subnet, 18, subnet. वो दोनों मिसमैच हो गया। ओके, सो 18.25। ओके, आप दे सकते हो अपना रेंज, सेव इट। ओके, सो सक्सेसफुली सेव्ड। तो खुद के भी ऐसे एरर्स कर सकते हो क्या, एंड फिक्स इट। ओके, सो दिस इज द रेंज, सो ये रेंज में मिलना चाहिए IP, राइट। सो लेट्स गो टू दिस PC एंड चेक वेदर आई एम गेटिंग द रेंज और नॉट। तो यहाँ पे एक डालते हैं नोड, लेट्स सी एंड जस्ट सेव इट। इट्स एंड हियर
You can see turn on. Yeah. Let's see IP आ रहा है कि नहीं. Default लेना चाहिए, I think. Okay, so let's see if I'm getting any request or not, but I got the IP anyhow. Okay, but ये default उसमें से लिया, so VLAN define करना पड़ेगा, right हमें. So VLAN define कर देते हैं. Switch. Now let me just check show Ethernet summary again. So I think it's done. Okay, so भी हम डालते हैं VLANs को. ये कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है? 1/1/0. No need, sir. It will be by default. VLAN 1 should be on. VLAN 18, it's fine. कुछ भी दे दो VLAN 18. And what I will do, let's see if I can put that on separate VLAN 1/0. Yeah, it's VLAN default data. Yes. उसको VLAN में डाल देना. All right, so it will work. This is not, yes, of course, this is part of switch configuration. So just verify it. So we will verify it right now. So let's put it on the VLAN switch. So config T, and this is on. Yeah, I'm putting that on VLAN v1/0. So int gig 1/0 switch mode access VLAN 20. Sorry, 18. Okay, and that is fine. Show VLAN. Okay, तो मैंने देखो VLAN पे तो डाल दिया एक 18 करके. So this is the 18 one. Okay, so I think it should get, otherwise fine. Switch में से ही होगा, right? So let's check VLAN is working. Maybe go to the firewall और देखते हैं इसका जो रिक्वेस्ट है आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Again. So 132.16.17.16. Okay, admin and put the password. Appearance, let's just put the, change the settings. Appearance change and make it 18 or 20. Yeah. Okay. Option number 4, and TCP dump port 67 or 68. Okay, so the DHCP का जो port है वो 67 और 68 पे चलता है, right? Now how to verify whether issue is from the firewall or from the switch? Let's check whether traffic जो है वो hit हो रहा है कि नहीं, right? Firewall पे hit होना चाहिए, correct? So if it is not hitting, that means still we have to do some configuration is missing. All right, as per your chat, I can see a lot of comments. तो वही है issue. Let's resend the request. तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, right? So that is the reason. Okay, so let me know what I'm missing on the switch side. Okay, you want me to configure VLAN on firewall? Okay, let's configure. So let me just go and to the firewall. All right, and configure VLAN. So interface. We have not configured VLAN on the, we have configured direct network here. So it should take.
it is on default VLAN 1. Okay, by default it is taking VLAN 1. So what I can do, yeah, we can change the VLAN. So let's configure VLAN then. So VLAN, give the VLAN name. VLAN, let's say 18. 18 is already created, so it's fine. Okay, and VLAN ID. Okay, so default VLAN and the VLAN we are creating. So default VLAN is already 18 network. Let me do 20 here. Okay, दूसरा एक network ले लेते हैं. 20 करूंगा मैं वहाँ पे. So name कौन से पोर्ट पे है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. ब्रिज पोर्ट पे है, ऑलराइट. एंड जोन विल बी LAN. ओके, और यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 172.16.20.16 एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव. सो ये VLAN क्रिएट हो जाएगा फायरवॉल के जो ब्रिज इंटरफेस है उस. सो यहाँ पे भी मुझे VLAN कॉन्फ़िगर करने पड़ेगा स्विच पे, वो करते हैं, नो वरीज. पर पहले VLAN यहाँ पे देख लेते हैं. So we have configured VLAN under bridge. So this is bridge and the VLAN. Okay, so bridge के नीचे हमने VLAN configure किया. Okay, same thing we can see it here. और यहाँ से भी हम configure कर सकते, दोनों same ही है. Whether you create the interface from here or here. Okay, so I think it's done. DHCP भी डाल ही देते हैं इसमें. DHCP and let's me add the DHCP. Okay, so default तो देखेंगे. So it's VLAN 20. इंटरफेस जो हमारा VLAN है 20. ठीक है. Yeah, we will do that. Yes, we will create VLAN 20. Okay, yeah, sure. VLAN 20. So 16.20.20, let's say. Okay, और इसमें तो कुछ है नहीं, अभी डिफॉल्ट रखते हैं. ऑलराइट, सो जस्ट सिंपली सेव इट. ऑलराइट, सो DHCP भी कर दिया, VLAN कॉन्फ़िगर कर दिया. अब स्विच पे VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं. सो VLAN 20. ओके, एग्जिट. एंड जो हमारा जो पोर्ट 3 था, राइट, उस पे हम करते हैं. सो इंटरफेस 0/3 स्विच मोड एक्सेस, स्विच एक्सेस VLAN 20. Done. Now show VLAN. All right, so I can see VLAN 3. VLAN 20 जो है वो मेरा किस पे, 3 पे. So 3 पे क्या है? Okay, I will remove this. (0/) ओके, शायद मैंने वो गलत डाल दिया उस पे. या config t int 0/3. It was no okay, switch trunk encapsulate था, right? Trunk mode था वो. VLAN all. अच्छा, ये कमांड नहीं डाला था, इट्स फाइन, उसमें भी डाल देते हैं. सो config t एंड दूसरा पोर्ट कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए, 1/0 यूज कर रहा हूँ. ओके, 1/1 यूज कर लेता हूँ. सो 1/1. सो इंटरफेस 1/1 switch mode access VLAN 20. Okay, let me check. Show VLAN. So 1/1 is my VLAN 20. Okay, बाकी सब default पे हैं. All right, and if I see show run, let's see that. Okay, so channel board all trunk allowed. और ये दो मेरा ये जो दो पोर्ट है, these two, 02 and 03.
That is my trunk port. Okay, it's fine. ये तो होना चाहिए. And what is 1/1 is my VLAN. Okay. Now let's check if I can get the request. Firewall पे request आ रहा है तो मेरा switch side configuration proper है. Alright, so TCP dump port number 67 or 68 जिस port पे काम कर रहा है, right? Let's see on the TCP if I'm getting the IP address or not. Okay, तो देखो अभी आ गया. Okay, 20. If I go to firewall तो देखो हमें यहाँ पे पहले इन रिक्वेस्ट मिला, यानी ब्रॉडकास्ट मिलेगा, राइट? 6768 पोर्ट नंबर पे पोर्ट F से आ रहा है, जो मेरा ब्रिज इंटरफेस है, दोनों को ब्रिज करा किया हुआ है. सो रिक्वेस्ट आया कि मुझे आईपी चाहिए, राइट, फ्रॉम द डीएचसीपी बूटस्ट्रैप, एंड वो ब्रिज को दिया उसने ब्रिज इंटरफेस में दिया, तो इन वहां पे होगा. ओके, तो 2 इन पैकेट्स मेरे यहाँ पे ऐसे होंगे. ऑलराइट, यू कैन सी दिस. फिर उसने टैग किया विलन को. ऑलराइट, टैग हो चुका है, इतने पैकेट से. फिर उसने वापिस एक्चुअली वापिस रिक्वेस्ट है यहाँ पे. ओके, एंड देन वी हैव इन रिक्वेस्ट बैक. हियर आई थिंक लेट्स गो टू दी पैकेट कैप्चर. यहाँ पे पता नहीं ठीक से आउट रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रहा है. आउट भी लिखना चाहिए, राइट, कि मैंने आईपी ये लीज करके दिया. सो यू शुड गेट दैट. ओके, नो वरीज, इफ यू आर नॉट गेटिंग वी विल अंडरस्टैंड इट. सो डीएचसीपी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आगे. सो लेट मी ट्राई बैक. Okay, so I'm sending the request back. Let's see. Okay, no worries. So I think request is coming, but it is getting processed. Usko IP mila. So this is way. Let me just go to the network and DHCP. Okay, we'll continue for some time and then we'll configure LSCP and then we'll drop. If you scroll down, you will get the IP details here. Okay, packet level बाद में देखते हैं. Configuration, yes, of course, पहले देखते हैं. So see, you are getting the IP address, right? VPC dynamic. All right, so right now, let me, if I make a continuous ping, इसमें तो पता नहीं ping continuous. Let me see if I can do a continuous ping 1. Okay, 172.16.17.16 is my firewall IP. Okay, तो ping हो रहा है. Let me say ping. So it should work actually. Okay, so why it is not working? Rule required होगा, right? So let's check. अभी देखते हैं. रिक्वेस्ट आ रहा है पहले, तो TCP dump and 172.16.17.16 and proto ICMP filter करना है. So yes, I can see some in request coming from other system. Okay, I think it is from here. यहाँ पे पिंग कंटिन्यूस है. ठीक है, ये कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, मुझे सोर्स आईपी 100 लेके आ रहा है. सो 100 से पिंग आ रहा है, तो यही तो 100 है मेरे पास. तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स आएंगे. लेट मी जस्ट इनिशिएट. ओके, सो कुछ आना नहीं चाहिए. पहले आ रहा था, राइट, 100 से रिक्वेस्ट आ रही थी. नाउ आई हैव स्टॉप द पिंग. अभी देखते हैं वीपीसी से क्या हो रहा है. ओके, सो लेट्स चेक. ओके, तो इन आ रहा है, आउट नहीं हो रहा, राइट. We can see the packet in but not out. Let's go to packet capture to find out the reason. Okay, so again I can see packet coming in. Request तो आ रही, request packets है मेरे पास, but it is not reachable. Rule नहीं है, right? Rule नहीं होगा, उसकी वजह से वो drop कर रहा होगा. So let's verify whether it require rule or not. 116.17.16 and proto ICM. Okay, turn the packet capture on and initiate the ping again. Okay, so let's click on refresh. All right, so I can see
देखो अभी उसको सोर्स आईपी तो 00 लेके आ रहा है, स्ट्रेंज। ओके, सो देखो अभी उसको रूल तो नहीं मिल रहा है, राइट? सो दैट इज द रीजन वो इशू कर रहा है। सो लेट मी जस्ट गो टू दी सेटिंग्स, नेटवर्क, और इस पे राउटिंग कर देते हैं enable। चलो लेट्स सी इफ इट इज द इशू विद द राउटिंग। सो इफ आई क्लिक ऑन ब्रिज, ओके, ब्रिज पे क्लिक करोगे तो ब्रिज इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर क्लिक करोगे तो ठीक है, तो ऐसे ब्रिज ओपन होगा, और ब्रिज 0 पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट enable routing, it makes any difference or not, क्योंकि वो 0 लेके आ रहा है। ओके, सो आई थिंक इट इज डन। Firewall in the system side. No, I have VPC here, VPC है तो ओके, फायरवॉल से है वो, क्योंकि दो नेटवर्क है, फायरवॉल रूल नहीं मिल रहा है उसको, हम वही वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, सो इफ आई गो टू डायग्नोस्टिक, रितेश, ओके, यहाँ पे वीपीसी से कर रहा हूँ, उसमें फायरवॉल नहीं है। सो जनरली क्या इशू है, देखो ट्रैफिक तो आ रहा है यार, ये रहा, है ना, और इसको कुछ इसको रूल नहीं मिल रहा है। ओके, सो यू कैन सी रूल 0। ओके, तो ये तो पता चल गया, तो चलो एक रूल बना के देख लेते हैं। कौन सा है? लैन टू लैन रूल। टेस्टिंग के लिए एक लैन टू लैन रूल क्रिएट करते हैं। एज पर द पैकेट कैप्चर रूल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ कि दो नेटवर्क है मेरे पास, वो लैन टू लैन है, तो एक लैन टू लैन सब अभी अलाउ कर रहा हूँ, बाद में इसको हम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करेंगे एज पर द क्राइटेरिया एंड द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में हम सब कुछ वैसे डिस्कस करने वाले हैं, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन, सोर्स नेटवर्क डिवाइस, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन नेटवर्क सर्विसेज, स्केड्यूल, जो स्केड्यूल पॉलिसी मैंने आपको पढ़ा था, स्केड्यूल डाल सकते हो, वी विल सी दैट, अटैच कर सकते हो यूजर का ग्रुप, कैप्टिव पोर्टल एनेबल कर सकते हो, नेटिंग लगा सकते हो, वेब फिल्टर लगा सकते हो, एप्लीकेशन सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, डीएससीपी मार्किंग, ट्रैफिक शेपिंग, बैंडविड्थ पॉलिसी, आईपीएस पॉलिसीज एंड ईमेल स्कैनिंग। ओके, तो अभी तो ये प्लेन रूल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। सो टॉप पे रखो, तो फायरवॉल रूल टेस्टिंग कर रहे हो, तो जैसे कि अभी एक पिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये ट्रबल शूट भी हो रहा है साथ में। सो लेन टू लेन टॉप, टॉप पे रखना है हमेशा रूल, टेस्ट करने के लिए हमेशा उसको टेस्ट करना है, तो फिर उसके बाद उसको अगर कुछ इशू आ रहा है डिसेबल कर दो, लाइव में कर रहे हो तो, बट लैब पे टॉप पे रखो। ओके, रूल ग्रुप नन, इट्स फाइन। अभी मेरा जो जोन है वो मैं लैन टू लैन कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, एनी कोई भी डिवाइस या नेटवर्क, और जोन टू जोन, और डेस्टिनेशन भी मैं नहीं रख रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज प्लेन फायरवॉल रूल, ये है प्लेन फायरवॉल रूल, यानी बाईपास रूल बोल सकते हो, प्लेन फायरवॉल रूल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, बाद में रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ओके, सो लेट मी सेव द रूल एंड चेक। अच्छा, यहाँ पे क्या लेकर रहा है, आउट हो रहा है, ये पिंक फायरवॉल पिंक किया इसने, कहाँ से किया उसने पता नहीं। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड दिस रूल, नाउ लेट मी जस्ट चेक whether I am getting request or not। रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा, जो 20 वाला जो आईपी है उससे रिक्वेस्ट तो आना चाहिए, राइट? जो इस वीपीसी का जो आईपी है उसका आना चाहिए। सो लेट मी चेक, पिंग इज स्टिल नॉट वर्किंग। सो लेट्स गो टू दी एंड चेक। ओके, इट इज टेकिंग 00, गेटवे शायद नहीं होगा इसमें, आईपी। ओके, सो इट सेज गेटवे है, गेटवे क्यों 00 है? और इंटरफेस पे डीएचसीपी पे सो आपने दिस इज द इशू, राइट? गेटवे नहीं डाला एक है। बार है ना मैनुअल दे देते हैं। सो आईपी एड्रेस, आईपी 172.16.20,
इसको DHCP से IP मिल गया राइट, बट वो नहीं मिला। ओके कोई बात नहीं, अभी एक बार मैनुअली सेट कर देते हैं अभी के लिए। सो इट्स 172.16.16.20.20 and 255.255.255.0 172 गेटवे मेरा होना चाहिए 16.20.16 जो मेरा फाइल पे। ओके बीइंग यूज्ड बाय दिस, कोई बात नहीं, और एक IP यूज कर लेते हैं 25 यूज कर लेते हैं ना। This is already being used by MAC address. Okay, address cannot be changed. ओके एक बार वापस रिलीज रिन्यू करके एक बार ट्राई करते हैं। Used by 20. Okay, sorry. On interface DSP score default gateway is not mentioned. Okay, let's go to the firewall then. By default तो आना चाहिए. So if I go to network and DSCP, let's see. Okay, so it is here. Once you select the interface, okay, that is the default gateway. Use IP So this will be interface the as a gateway. default Yes, gateway. yeah. IP इसने lazy नहीं किया. Okay, so that is the reason I think. Okay, so it may be the switch side we have to do some settings. Okay, so issue is from the switch side only. So let's verify. Sophos में तो इतना ही है. So show run. Let me see. Okay, सारे VLAN allow कर देते हैं जिससे एक बार वो execute कर देते हैं command. Yeah. So let me try switch interface port channel 1 switch trunk allow VLAN all. Okay, and the range interface range GI कौन से पोर्ट थे? So it is 3 and 2. Okay, 3 and 2 है और यहाँ पे 3 and 2. Okay, 0, 2 and 3 and no. Let me just remove this. Okay, it is on interface port 3. It's fine. Okay, so what I will do, switch trunk encapsulate dot more trunk allow VLAN or VLAN. Okay, so it's done, and channel group to hai already. Let's verify back. Show in trunk. Yeah, I'm showing. Okay, Ritesh. So if I just check my port channel, this looks fine. This also looks fine. I think DK extra, yeah. Okay, no worries. And 1/1 is my is 1/1 is my VLAN 20. Now what you want? You want show trunk. Okay, so here. Okay, so I think yes, it is allowed. Okay, Ritesh. Now let's verify. Now what I will do, let me try back if I can get the IP. DORA process complete हो रहा है यहाँ पे तो being used by IP. पहले ऐसा करते हैं, इसको शट डाउन करते हैं. Okay, now IP. Let's verify. Otherwise, still it is maybe issue is from the switch side. I believe from the switch, I'm not doing something not correct, right?
Okay, so IP address DHCP or IP DHCP. So if I go to DHCP, let me just click on DHCP on firewall. IP लीज हुआ होगा तो पता चलेगा, राइट? तो लीज IP कहाँ से मिलेगा? ये रहा, यहाँ पे है। सो जो भी है IP मुझे यहाँ पे दिखेगा उसको क्या लीज हुआ है। तो देखो यहाँ पे लेट मी जस्ट चेक 20, ये रहा 2020, ओके, एंड दिस इज द मैक एड्रेस and I'm getting the IP address. Okay, fine. 20 में से मिला 16 16 20 16 16 20. So I think it's done. I think what is the issue? Hello. So IP, Am I show IP. am I Let's audible? see what I have got from DHCP. Show IP. But here it is not showing. कोई बात नहीं, शायद मुझे लगता है इसको दूसरा कोई डाल देते हैं, नो वरीज। 0/1, तो 0/1 कौन सा है यहाँ पे? 0/1, तो इसको मैं VLAN उसमें डालता हूँ, config int 0/1 switch mode access VLAN 20. ओके, तो यहाँ पे मुझे वो मिलना चाहिए विंडोज पीसी पे। ओके, तो ये मेरा अलग ही हो जाएगा, इसमें मेरे को नहीं डालना था, VLAN नहीं करना चाहिए था। ओके फाइन, नो वरीज, लेट मी डू वन थिंग, इसको उसी पे ही रहने देते हैं, नहीं तो इसका एक्सेस ही नहीं चला जाएगा, राइट? एक्सेस चला गया होगा। सो आई विल कीप इन द डिफॉल्ट ओनली, सो config t एंड डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट में ही रखते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। शो VLAN। ओके, तो VLAN में तो है ही, IP भी उसको लीज भी हो रहा है, फायरवॉल तो बता रहा है IP लीज हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, वर्चुअल है तो एक बार लेट्स से इफ आई कैन डिलीट द नोड और एक कोई दूसरा नोड डाल के देखते हैं। ओके, सो एक बार वापस नोड डाल के देखते हैं, मे बी नोड का तो इशू नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक इट वाज 1/0। ओके, सो 1/1 पे था, सो 1/1। ओके, जस्ट टर्न ऑन, लेट्स सी। तो जो पोर्ट GF है वो मेरा भी ब्रिज मोड पे, और उस पे VLAN है तो चलना चाहिए, yes, उस पे IP भी लीज हो रहा है अगर मैं फाइल पे जाऊँ। ऑलराइट, सो उस पे IP भी लीज हो रहा है। yes, the configuration is working, so we have to fix it on the switch on the end system side. Drunk. Okay, seems to be good. Okay, so I will do one thing. It's fine, configuration is proper. So if I check show run int GI0/3, and I'm just removing this one. This is not required. This will not, I don't believe it will make any sense, but it's fine. I will remove this. सब तो allowed किया है, so it's fine. Switch port trunk allow VLAN.
Oh, okay. Seems to be fine now. Let me just go here and check. Access on trunk port. Which one? I think I removed that. It was there. I removed. Yes. Okay. So if I check back, show run. Okay. Solar trunk port only. सो सब ट्रंक पोर्ट ही है जो मेरा ब्रिज है, ये मेरा पोर्ट चैनल है वो ट्रंक में है, राइट. एंड देन मेरा पोर्ट 0/2 0/3 वो भी ट्रंक है. ओके. एंड पोर्ट चैनल पे डाला हुआ है. फिर 1/1 पे पेसी कनेक्टेड है. ओके. यहाँ पे ये रहा. सो ये तो एक्सेस ही है. सो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20. आई थिंक दिस विल डू, राइट. उतना ही. इसके बाद इस और कोई स्टेप्स है तो मुझे आप बता सकते हो. आई थिंक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग. लुक्स गुड एवरीवन. ओके. वापिस एक बार दिखा देता. पोर्ट चैनल. ऑलराइट. सो देखो ट्रंक पोर्ट सारे VLAN अलाउड है. स्विच साइड इज ओके. हाँ या स्विच साइड भी अभी ओके है. फायरवॉल में भी ओके. नो वरीज. वो रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा. ओके. सो वापस एक बात है कि पोर्ट चैनल परफेक्ट है यहाँ पे. यस. और जो मैंने 2 पोर्ट यूज किए हैं उस पे भी मैंने ट्रंक ही अलाउड किया है. ओके. एंड पोर्ट चैनल अलाउड है. सारे VLAN पास किए. और इस पे मैंने VLAN 20 पास किया जो मैंने फावल पे कॉन्फ़िगर किया है. शो इंटू /02 स्विच पोर्ट /02. Here it is. I think it is in trunk. Ketan, you want me to change to switch port? No. Switch No, no, port no, हम sir. No. trunk से No. चलना चाहिए. ये भी चलना That is चाहिए, okay. right? Trunk port is okay. Okay, but I want to see that switch port. It will show Okay. all the port trunk VLAN is all the VLAN is passing or no. Now That let me check first. My firewall is working or not. 172.16.16 firewall access ही चला गया. So if I check IP 17.16. config. No, you're pinging 16.16, not 17.16. Okay, it's there. Okay, so let me just go to that VPC and IP DHCP. डोरा प्रोसेस तो कंप्लीट हो रहा है. आईपी भी मिल रहा है मुझे 20. उसने लीज भी किया बट उसको गेटवे क्यों नहीं मिला. शो Type IP config. IP. IP config. Sir, can you create one more time DHCP? Can you delete this DHCP scope and create it again? Because Okay, this is because layer, I'm not this is using layer is 2 VLAN. this This is is a layer layer 2 3 VLAN. switch. No worries. This is Let me just save this configuration. Okay, might एक बार boot copy to running to startup. Let me check on the firewall logs क्या बोल रहे पहले यहाँ पे. So if I check the lease IP, let me change the lease IP, starting lease IP. If I change to 25, okay, 25 से 200 रखते हैं. All right. डिफॉल्ट गेटवे उसको ये मिलेगा 20 डॉट जो इंटरफेस मैंने सिलेक्ट Sir, किया. can you राइट. delete? सो Can you delete दिस this इज thing and फाइन. create it one more time? ओके. कॉन्फ्लिक्ट हटा देते हैं. कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई है तो. राइट. एंड फाइन. VLAN सेव द 18 लिखा है DHCP आपने sir. You mentioned एंड VLAN लेट्स 18 चेक द लॉग्स. TCP डम्प्स चेक on करते हैं और एक बार ड्रॉप्स देते. interface. फायरवॉल कुछ साइड में ड्रॉप तो नहीं कर VLAN रहा है. 18 is एंड mentioned ये तो जनरली चलना चाहिए. on ये सेम सेटिंग्स. इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं. फायरवॉल में भी firewall. ये चलना चाहिए. ओके. फाइल में चल ही रहा है. आईपी लिस्ट दिखा रहा है मुझे. देखते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ वापिस क्या आईपी लिस्ट दिखा रहा है. सो विल सी दैट 16. ओके. ऑन द इंटरफेस VLAN 18 इज मेंशन ऑन द फाइल. नहीं, VLAN 20 है. देखो मैं अभी दिखा देता हूँ. अभी जो VPC है, ठीक है, जिस पे मैंने किया वो 1/1 है.
Okay, so it is 1/1. So if I go to firewall, switch, okay, switch पे जाते हैं तो 1/1 जो है वो ये रहा. ओके, तो VLAN 20 असाइन किया है उसमें. ओके, सो firewall पे जाते हैं. ओके, what you want to check? So on firewall, let's go to the firewall and do one thing. ये रहा VLAN. ठीक है, यहाँ पे भी VLAN है. Interface. If I go scroll down and click here. Okay, so here it is VLAN. Okay, so यहाँ पे VLAN तो 20 है, ID 20 है, सिर्फ मैंने नाम 18 दिया हुआ है. इट्स ओके, यू कैन गिव 20. ओके, तो मैंने जो टैग है वो तो 20 ही लगाया है यहाँ पे. सो इंटरफेस का जो टैग है वो 20 ही है. अपडेट कर देते हैं, नो वरीज. इसका सिर्फ नाम आप तो कुछ भी रख सकते हो, बट टैग इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टैग इज 20. सो लेट मी जस्ट सेव इट बैक. Okay, and do one thing. I will delete the VLAN 18. Okay, VLAN 18 को ऐसे delete. Okay, 20 is there, right? So it's 20. Let me click here. Okay, VLAN 18 करके कोई है, so it's fine. And DSCP. Let me just go to DSCP and delete this one. ओके, 18 वाला डिलीट कर देते हैं, इसको भी नहीं जरूरत है. VLAN 20 पे ही तो DSCP चला रहे, राइट? सो द डिफॉल्ट गेटवे वुड बी 20.16. ओके, तो अभी TCP डम्प स्टार्ट कर देते हैं कि रिक्वेस्ट आ रहा है. ओके, आउट तो नहीं हो रहा है, वो नहीं तो IP जो लीज कर रहा है, ठीक है, आउट होना चाहिए, करेक्ट? हेलो, It's routing enable on the switch. Oh yeah, no, that is not enabled. That is maybe the issue. Yes. Okay, so let me just do that. IP routing is not enabled, sir. Okay, let's check. राउटिंग का ही इशू होगा. IP राउटिंग एनेबल किया नहीं नहीं था मैंने, चाहिए. सो दैट कुड No बी द need. इशू. IP ओके, routing, no लेट्स need. वेरीफाई दैट. No सो need routing. TCP डम्प तो नहीं है, एंड लेट मी ट्राई DSCP. या IP राउटिंग इज नॉट नीडेड, बट देखो अभी उसको कौन सा IP लीज हुआ, 20. ओके, IP 25. तो लीज होता है. सो इफ आई चेक IP शो IP, so it's not getting the IP address yet. Go to If I firewall go to interface VLAN 18 interface if I go to logs, firewall interface VLAN 18 it is not showing that VLAN is 20. leasing the IP. Okay, I'm there, Ketan. No sir, interface. Go to the One interface. minute. Let's speak up. Yes, Ketan. Go to the Speak up. interface, sir. Go to the interface. Interface. Okay. Yes. Mhm. You created VLAN, right? Yes. Here it is. VLAN Yeah, 20. click on that, sir. Mhm. IP mask is that VLAN is defined in gateway IP is no needed. That's mentioned the gateway IP. Gateway IP is here on the DSCP. Let me show you. It's here. So whatever interface you select, that is the gateway IP. So if let's say this is the default, right? You can see here the default gateway is getting from the DSCP server. Okay, that is correct. Yes. Everything is correct. If you look here, it is just as it is virtual. What I will do, I will just, if I restart the lab, it might work. Okay, so don't Could be that is. Could be possible. Yes, yeah. Yes. Could be possible that. So we will restart it, not now. I will restart it later. Okay, so see what is showing me here, 20.25, and this is the MAC address of that VPC. And if I go to the VPC, yes, it's getting the IP address. If you just see, it got leased from the firewall, but anyhow, it is misbehaving. Okay, so no worries. What I will do, I will just restart this lab. It will work. Configuration is proper. All right, we are not doing. I don't believe there is a configuration issue. All right. The thing is that only one thing I have noted, that whatever IP got leased, I should be able to see it here. Okay, so let me just check if I can see that. If I say ipconfig/renew
let's see if I can perform the operation. Okay, because I have given static. So property, and let's say 4, and let me just select DSCP. Okay, so let me just restart this session if I can get. Okay, no, I lose the connection because let's see if I got the IP address from DSCP server. Okay, if you let's do one thing, let's configure lag then. Okay, I think this might work. See, this one, it got the IP from the DSCP server. So what I will do, let me first connect it again, restart, and first understand the DSCP request. Don't worry, same configuration will work if you do the same configuration. Today it is not working because this is, as we know, this is virtual. Okay, yeah, I got the issue. It is the issue with the registration. Okay, so we have not registered this firewall, so that is causing the issue. All right, guys, your device should be registered at least for with the base license. The So base that is the license, sir, reason it is not. sir, in Yes. the base license, Now ESCP let's should work, check. right? Because bridge interface is the functionality of the firewall. We are adding some, enabling some first functionalities. Because the device is not registered, it will not work. Now, one more thing, ESCP, sorry, TCP dump, and let me check port 67 or 68. ओके 6768 पे काम करेगा, एक बार रिन्यू करके देखते हैं. ओके देखो अभी यहाँ पे रिन्यू का रिक्वेस्ट आया, राइट. ओके रिलीज करके देखते हैं. हाँ देखो अभी ये ओके 2 ही पैकेट्स होते हैं जनरली. ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मैं डिफॉल्ट पोर्ट पे चला रहा हूँ. डिफॉल्ट पे काम करेगा, ठीक है, बट मैं अगर ब्रिज पे करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने फायरवॉल रजिस्टर्ड नहीं किया है, उसकी वजह से नहीं चल रहा है. राइट, सो सॉरी गाइस, I forgot to register the firewall, but let's see understand DSCP now here. तो पोर्ट ए पे रिक्वेस्ट आया. ओके उसने रिक्वेस्ट भेजा, मुझे आईपी चाहिए. ओके एंड देन ओके यहाँ पे तो उसने रिन्यू करने के लिए भेजा, बट यहाँ पे उसने आईपी नया उसने भेजा. राइट, सो दिस वे यू कैन see the request reply packets. Okay, if you have time, then let's register and check it. Is it fine if we continue, guys? Go ahead, sir. 1 minute. Hello. Go ahead. Okay, let's register the firewall. So what I will do, let me just go to the administration and see. Okay, so let me click on registered. On the switch side, I have configured this switch, right, for lag purpose. So if I say show run, okay, so yeah, so what I have here, let me see. Okay, so I have 6020, the port channel as a switch port. Okay, and I'm using this as a LSCP. So if I configure, if I see show a third channel summary, okay, it is showing me proper way. Okay, one more thing. Let me, before I register, let me just check with the LSCP. Okay, then I will register the firewall. Just give me a moment. So let's go to network, and I have port number D and E. इन दोनों को मैं LSCP करते हैं. चलो, so click on add interface, और यहाँ पे लैग है. लैग आपका LSCP होगा. ऑलराइट, सो इट इज LSCP 8203 AD प्रोटोकॉल यूज करेगा. सो मैं कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, उसके बाद रजिस्टर करते हैं. अगर नहीं चलेगा तो फिर रजिस्टर करना ही पड़ेगा. ऑलराइट, सो गिव द नेम लाइक लैग एंड पोर्ट हमारा था DNE. ओके, 2 पोर्ट यूज कर, 4 पोर्ट यूज कर सकते हो आप फायरवॉल पे. अभी 2 करते हैं.
सो पोर्ट आई थिंक डी एंड ई इज देयर, राइट? ये तो दोनों मैंने ऑलरेडी बंडल कर दिया है। इस साइड करते हैं, फायरवॉल के साइड क्या है, तो इसको हम डीएमसी जोन कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? सो यहाँ पे हमारे सर्वर्स होंगे और इसका आईपी देते हैं 172.16.18, ओके 19.16, ओके 19 दिया हुआ है नेट, आप अपना हिसाब से दे सकते हो, इट्स फाइन। सो सिंपल, इट्स लैग पोर्ट्स सिलेक्ट करो। आपको दो इसमें ऑप्शन, एक्टिव बैकअप एंड एक्टिव एक्टिव। सो अभी एलएससीपी कर रहे हैं, सो लेट्स कॉन्फ़िगर एलएससीपी मोड, आईपी एड्रेस दे दो एंड सेव कर दो। ऑलराइट, let's save and see first what is the difference, कौन से सिंबल आएंगे यहाँ पे। सो लैग यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, ऑलराइट। सो इफ आई क्लिक ऑन लैग, यहाँ पे क्लिक करना है, सो इट विल ओपन द रेस्ट ऑफ द पोर्ट। सो जो मेंबर होंगे, लैग के जो मेंबर्स हैं, वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिखेंगे एंड द नेटवर्क इज दिस, ऑलराइट। सो ओके, मैं ये नहीं दे सकता, राइट? स्विच पे तो मैंने दूसरा नेटवर्क दिया है 192.16.192.168.60.1, ओके। स्विच है मैंने 2 दिया है, इफ यू चेक, मैंने यहाँ पे 2 दिया है, सॉरी। सो मैं यही नेटवर्क यूज कर लेता हूँ फायरवॉल पे भी, ओके। तो मैं चेंज कर देता हूँ, 60 रखता हूँ, ओके। लेट मी जस्ट अपडेट द लैग, ओके। उसके बाद लेट्स मी check some settings like show network lag interface, ओके। जो आपने नाम दिए है वो नाम लिखो लैग और प्रेस एंटर, ओके। तो आपको दिखेगा कि आपने लैग कॉन्फ़िगर किया है, ऑलराइट। और एक चीज करना है, ये स्टैटिक मोड डिसेबल है तो उसको एनेबल कर देते हैं। सो इफ आई सी सेट नेटवर्क, ओके, कमांड मैं आपको भेज देता हूँ, ओके। सो सेट नेटवर्क, then what we have next, tap करोगे तो आ जाएगा, then we have lag interface, lag, then we have tab lag management, ओके। lag management में मोड, ओके, या फिर LSCP स्ट्रिक मोड, ठीक है, स्ट्रिक मोड में जाना है एंड वहाँ पे टैप करो, इट इज शोइंग मी एनेबल एंड डिसेबल, ओके। तो एनेबल है, डिसेबल है, तो इसको एनेबल करना है, ऑलराइट। स्ट्रिक मोड पे एनेबल करना है, ऑलराइट। सो दिस माइट वर्क, ओके। तो एक ये आपको एग्जीक्यूट करना है कमांड, सो ये अपडेट हो चुका है, सो दिस इज द कमांड, ओके। लेट मी जस्ट हाईलाइट, ओके। फिर आप वीडियो पॉज करके ये वाला कमांड सीधा टाइप कर सकते हो, ओके। लैग आपका जो यहाँ पे है वो नाम है, जो मैंने अभी नेम दिया है वही नेम देना है, जो स्मॉल में है, बिग में, वॉट एवर, just make sure it is name and this is the setting, okay। So it is updated. Now let me check the status. So show lag interface lag, जो मेरा नाम है, ओके। ये कौन सा नाम है, यहाँ पे था, ओके। मैंने यहाँ पे नाम दिया था, राइट? ये वही है। आप अगर जो भी नाम दोगे वो इधर दिखेगा, ओके, टैप करोगे तो, ओके। सो ये मैंने स्ट्रिक्ट मोड एनेबल कर दिए है, ऑलराइट। और डिटेल्स देखनी है, लाइक शो नेटवर्क इंटरफेस लैग, लैग रनिंग कॉन्फिग, ओके। तो रनिंग कॉन्फिग क्या है लैग की, सो वो रन करोगे तो आपको ये डिटेल्स मिलेगी, ओके। सो आई कैन सी 2 पोर्ट यूज कर रहा हूँ, अप है, ऑलराइट। फिर आप यहाँ पे ये डिले अगर सेट करना है एज पर द पॉलिसी आप सेट कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग लेवल लेयर 2, कौन से पोर्ट डी और पोर्ट ए यूज किया है मैंने, ठीक है, ओके। वर्चुअल है तो ये अननोन दिखेगा, सो स्किप दिस पार्ट, ओके। यहाँ पे अगर आप वर्चुअल में काम कर रहे हो, इट्स फाइन, यू कैन इग्नोर दिस अननोन, रेस्ट इट इज फाइन। अगर आप लाइव में काम करोगे तो आपको यहाँ पे स्पीड और डुप्लेक्स दिखेगा, ओके। सो डोंट वरी, ऑलराइट। सो लेग यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, फाउल में भी कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पे और ये भी हो गया। चलो पिंग करके देखते हैं, अगर आई कैन पिंग, ओके। सो स्विच को पिंग करके देखते हैं, इफ आई कैन पॉइंट टू पॉइंट पिंग होना चाहिए। सो 192.168.60.2, ओके। तो पिंग हो रहा है, जो स्विच है वो मेरा
यहाँ से पिंग हो रहा है, करेक्ट। ये है स्विच। अभी मैं स्विच पे आ जाता हूँ और इसको भी पिंग करो। पिंग 192.168.60.1 रिपीट 10,000 करते हैं। ओके, सो आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, ज़्यादा ही कर दिया, पहले एक छोटा ही करना था। 60.1। ओके, फायरवॉल ये राइट, तो यहाँ से मैं फायरवॉल तो पिंग कर पा रहा हूँ। लेट मी चेक टीसीपी डंप एंड होस्ट 192.168.60.1। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक रीच हो रहा है। ओके, सो आई कैन सी ट्रैफिक इज कमिंग राइट इन इन ओके, आउट इन हो रहा है। ओके, सो आई कैन सी ट्रैफिक इज नॉट गोइंग आउट क्योंकि हेलो रजिस्टर सर, नहीं रूल अगेन राइट। हो सर सकता रूल है ना। रूल रूल बनाना पड़ेगा ना, डीएम डीएम ओके, जोड़ में रखा है तो। 1 मिनट, ये 1 मिनट, आई एम सो सॉरी। यस हितेश। डीएम जेड में रखा है तो रूल्स बनाना पड़ेगा ना सर, लेन टू डीएम जेड। सॉरी हितेश, 1 मिनट, या प्लीज कंटिन्यू नाउ। सर डीएम जेड में रखा हुआ है तो अपने को फायरवॉल में एक जोन रूल्स बनाना पड़ेगा ना, पॉलिसी लेन टू डीएम जेड। बट हाँ, बट वो पॉइंट टू पॉइंट तो होना चाहिए ना पहले पिंग, राइट। ओके। स्विच टू फायरवॉल और स्वायर, तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है मेरा, तो आई थिंक वो पिंग होना चाहिए। अगर मैं शायद स्विच से पीसी से अगर पिंग करूँ या फिर यहाँ से पिंग करूँ तो हो सकता है मुझे फायरवॉल चाहिए। बट ये तो मेरा पॉइंट टू पॉइंट हो गया, आई थिंक वो तो चलना ही चाहिए। बट ये इसलिए नहीं हो रहा है, शायद वन ऑफ द रीजन मैंने बोला बताया ना कि रजिस्टर नहीं है। सो लेट्स रजिस्टर द फायरवॉल। ऑलराइट, इट विल टेक सम टाइम। लेट्स बूट इट। देखो अभी क्या हो रहा है, पैकेट्स देखो सबसे पहले विदाउट रजिस्टर, तो देखो इन पैकेट आ तो रहे हैं, इन हो रहे हैं, बट फायरवॉल प्रोसेस करके उसको आउट ही भेज नहीं रहा, तो यहाँ पे फायरवॉल का इश्यू है। ठीक है ना। अभी इन आ रहा है, आउट नहीं हो रहा है, तो अभी रिक्वेस्ट आ रही, आईसीएमपी रिक्वेस्ट तो आ रहा है, इन आ रहा है। ओके, कहाँ से आ रहा है, लैग इंटरफेस से आ रहा है। ओके, फिर पोर्ट ई से वो मीन्स वो पोर्ट ई ई और डी है। ओके, तो वो कोई सा भी उठा लेगा राइट इंटरफेस, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट वर्किंग। सो फायरवॉल तो यहाँ से पिंग कर रहे हैं यहाँ से, ये ऐसा नहीं कि फायरवॉल नहीं, क्योंकि फायरवॉल तो जो स्विच है वो उसको प्रोसेस कर रहा है। सो दैट कुड बी द रीजन, वन ऑफ द रीजन। So let's register the firewall. All right, and we don't have internet, so I have suspended. Let me resume the internet. Okay, चलना चाहिए actually. Only maybe the issue with the registration process. So मैंने register नहीं किया है. Let's check whether it is issue from the registration. फिर उसका वापिस पैकेट फ्लो देखेंगे। अभी देख रहे हैं ना, इन आउट है राइट। सो इफ आई चेक, देखो ड्रॉप हो रहा है। लेट्स चेक ड्रॉप, कि फायरवॉल ड्रॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो साइलेंट नहीं, कभी ऐसा भी होता है ड्रॉप नहीं मिलेगा। ओके, सो इफ आई चेक ड्रॉप, ड्रॉप होस्ट, ठीक है, dr होस्ट लिख सकते हैं। ओके, कमांड्स में अभी भेजता हूँ आपको। देखो अभी ये देखो फायरवॉल ड्रॉप कर रहा है विदाउट एनी रीजन। ओके, तो यहाँ पे रीजन नहीं बताएगा, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज लाइक, यस ऑफ कोर्स, रूल देखो नहीं कर रहा है, लोकल एसीएल, यानी फायरवॉल ही ड्रॉप कर रहा है ट्रैफिक। तो ड्रॉप करेगा तो पता ही चली जाएगा कि फायरवॉल ड्रॉप कर रहा है, देन वी हैव टू फिक्स द इश्यू। ऑलराइट, सो वी विल रजिस्टर। लेट्स सी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, इसको आईपी चाहिए होगा डीएचसीपी से। ओके, तो देखो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। लेट्स सी इफ वी कैन फिक्स द इश्यू। ऑलराइट, कॉन्फ़िगरेशन तो प्रॉपर ही है राइट। स्विच में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपने पूरा स्विच देख लिया, मैंने भी कॉन्फ़िगर कर लिया। तो सोफोस के साइड ये अब एक लग रहा है इशू है। यस, एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फायरवॉल आपका है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो पता चल गया रजिस्टर है और रजिस्टर नहीं है, तो क्या इशू करेगा। ऑलराइट, ओके, लेट मी जस्ट रजिस्टर। इफ स्टिल नॉट वर्किंग, एक बार रिबूट करेंगे अपना जो डिवाइसेस है, नोड्स। ओके, आई okay, so let's skip this. Okay, so yes,
You might get the yes motorcycles, जो भी motorcycles दिख रही है. Okay, verified, continue, and maybe boot. It will require the boot. Okay, so let me just go here and click on confirm registration, and it's done. Okay, successful. Let's see. Okay, so online help. So online help में मैंने आपको ले गया था, राइट? वहाँ पे है सारे कमांड्स. So if I just click on command line help, okay, we might get these device system routing, okay, network, device management, user portal, okay. TCP dump, okay, so yeah, okay, तो ये सारे commands हैं. All right, so here it is. Okay, boot हो रहा है, I think still. ओके, तब तक कमांड्स में देखो यहाँ पे क्या है, टीसीपी डम्प्स. ओके, सारे कमांड्स आपके यहाँ पे होंगे. सेट करना है सिस्टम क्लियर, विल गो थ्रू ऑल दिस वन बाय वन, चेक करेंगे. ओके, जैसे अभी लैब पे ये सब चलना चाहिए. एक्चुअली वर्चुअल है तो थोड़ा सा ये वो थोड़ा होगा, वो वही तो फिक्स करना है, राइट? लाइक अ लिनक्स सिस्टम, बिल्ड करो, डिस्ट्रॉय करो, बिल्ड करो, डिस्ट्रॉय करो. ऑलराइट, सो यू विल अंडरस्टैंड द डिवाइसेस एंड नोड्स. बट टीसीपी डंप एंड द ड्रॉप पैकेट, देखो यहाँ पे ये दो मेन है, वो हम देखते हैं. सो टीसीपी डंप पे क्लिक करोगे तो आपको सारी सिंटेक्स मिलेगी. ऑलराइट, तो फाइल डंप कैसे लेना है, ओके, पीकैप कैसे लेना है, वर्बोस से. ऑलराइट, सो वी विल टेक डिफरेंट टाइप, सारे जितने भी टीसी डंप के ऑप्शंस है वो सारे हम एग्जीक्यूट करेंगे टू आइडेंटिफाई द इशू. ऑलराइट, एंड देखेंगे बिहेवियर कैसा है. तो स्पेसिफिक होस्ट, अगर कोई आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट से देना है, ठीक है, ट्रैफिक लेना है, उसको फिल्टर करना है, तो आप ऐसे टीसीपी डंप लगा सकते हो. कोई नेटवर्क का पूरा टीसीपी डंप लेना है, पर्टिकुलर सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, जैसे अभी मैंने पोर्ट पे लिया था, राइट, डीएचसीपी चेक करने के लिए, राइट, वो रिन्यू रिलीज कर रहा था, राइट. फिर उसमें जब मैंने ब्रिज यूज किया तब वो आउट नहीं कर रहा था, बट मैं जो डिफॉल्ट यूज कर रहा था उस पर वो आउट कर रहा था, राइट. यहाँ पे देख लेना आप भी, रन करके देखोगे तो आइडिया आएगा. ऑलराइट, सो फर्स्ट इसको स्टॉप ही करना पड़ेगा. ओके, सो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, आई थिंक इट विल बी देयर, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसको सेव भी करूंगा. ओके, सेव करना है हमेशा प्रॉपर्टीज में जाके, तो फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो. ऑलराइट, सो यू माइट लूज दी कंसोल में, तो वैसे ही चले जाएंगे, सो ऑलवेज सेव इट. ओके, इसको क्या है नेक्स्ट. ओके, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल. मीनवाइल, हाँ, तो टीसीपी डंप आप नेटवर्क से ले सकते हो, होस्ट से ले सकते हो, पोर्ट नंबर से लिया था, राइट, 21, ओके, 22, डीएचसीपी एंड सो ऑन. तो आप पोर्ट नंबर से डंप्स ले सकते हो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट से भी ले सकते हो. कोई भी पोर्ट, वो सोर्स या डेस्टिनेशन हो या फिर पर्टिकुलर आपको डिफाइन करना है, तो आप सीधा ये कॉपी करके कर सकते हो पेस्ट, और यू कैन टेक दी लॉग्स. अभी जैसे हम लॉग्स ले रहे हैं, राइट, जैसे कि मैं ले रहा हूँ टीसीपी डंप कोई प्रोटो आईसीएमपी, राइट. तो एंड और आप लॉजिकल एंड और लगा सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको पता है, राइट. सो लाइक हियर हियर इज द एग्जांपल, कि आपको ये कौन सा एग्जांपल है कि इसके ऊपर डंप से 10.10.1 के ऊपर, बट आपको एसएसएच जो 22 पे लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चाहिए. सो यू कैन यूज दिस नोटेशन. सो सिमिलरली ये सारे नोटेशंस में आपको, जो जो नोटेशंस हम सारे नोटेशंस ये जो एग्जांपल में, वो तो यूज कर ही लेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो हम लैब पे ही वीडियो आप पोस्ट करके फिर उसको
एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, ऑलराइट, फॉर ट्रबल शूट। सो दिस इज टीसीपी डंप। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप पैकेट पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉप पैकेट में भी सेम सिंटेक्स ही रहेगा, ऑलराइट। सो देखो यहाँ पे ड्रॉप, उसमें आगे लगेगा ड्रॉप पैकेट, और डम्प्स ले रहे हो तो डम्प्स, तो हमें तो दोनों लेना है, दोनों सीएलआई पे ओपन कर लो, सीएलआई दो पुटी एप्लीकेशन ओपन करना है, ड्रॉप भी लेना है, साथों साथ आपको टीसीपी डंप और पैकेट कैप्चर भी चेक करना है, ऑलराइट, टू लर्न द फायरवॉल, ऑलराइट। और जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन तो प्रॉपर ही होगा, बट जैसे कि ये केस में भी नहीं चला, राइट, या हो सकता है कोई इशू हो सकता है नेक्स्ट डिवाइस में भी, तो फायरवॉल उसको कैसे लेगा, फायरवॉल का इशू है कि नहीं है, वो वेरीफाई करने के लिए ड्रॉप और टीसीपी डंप हो गया, ओके। अगर ड्रॉप होगा तो फायरवॉल ही ड्रॉप करेगा, ऑलराइट। यस आई प्रोवाइड, ओके, ओके, दिस इज द लिंक, ओके, आई एम शेयरिंग यू द लिंक, सारी लिंक्स सेव कर लो, ऑलराइट, यू कैन सेव दिस लिंक एंड यू कैन गो थ्रू दिस। एंड कोई डाउट है तो मुझे इसमें बताना, बाकी तो लैब पे सारे कमांड्स, हम ऑलमोस्ट सारे कमांड्स रन करेंगे, ऑलराइट, ऑल दिस कमांड्स, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज स्टेटस हियर, ओके, इसको है ना छोड़ देते हैं, इसको रजिस्टर करना है ना, लेट्स सी इफ आई कैन ट्राई टू रजिस्टर, और लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको रजिस्टर करके रखता हूँ, ऑलराइट, एंड we can join the batch tomorrow because it's already 9 p.m. today. Okay, इसको मैं रजिस्टर कर दूंगा and I will tomorrow I will show you the same settings. Okay, so we have, अभी हमारा क्या ब्रिज, हमने ब्रिज और LSCP कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट हमारा जो फायरवॉल है वो रजिस्टर्ड नहीं, उसकी वजह से शायद वो पिंग नहीं हो रहा है, ऑलराइट, सो इट्स नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द license issue. Okay, so I think I got the license. Okay, so let's click on continue. ऑटोमेटिक ले लिया उसने, ओके, आई पुट द आईपी एड्रेस, राइट, ओके, okay, now I think the firewall is registered, so let's go to routing. Okay, let's verify the settings, network में जाना है, okay, and let's see, okay, तो ये मेरा lag था, right, lag देखते हैं, so it's lag here, so if I go to CLI, पहले CLI पे ping करके देखते हैं, एक तो मेरा था lag, and here it was my bridge, okay, and I have ये मेरा गेटवे 20.16 DHCP is running, and one more thing, just want to verify the license. Okay, base license is done. I think now I have the base license. Okay, fine. Now let's check the traffic flow. अब fix करते हैं. So let me just go here and ping once. अभी मैं leg की तरफ ping कर रहा हूँ, leg, so 160.60.2. Okay, तो firewall से तो ping मिल रहा है मुझे. Okay, now let's go to the switch. Okay, so it's here. If I check this status, ये तो ping हो जाना चाहिए यहाँ पे तो. Let me just do one thing. 60.1 interface, I think this port are up. That's the reason I'm able to ping. Okay, so let me just go to the firewall now. So registration तो issue नहीं है, right? So 192.16.192.168.60.1 and proto ICMP proto. Let's see the traffic, it's coming in, and let me check drop भी देख लेते हैं. yes, drop तो कर ही रहा है, DR. ओके, इसी को ही ड्रॉप चेक, इसमें टीसीपी डंप चाहिए, इसी को ही ड्रॉप चेक करते हैं. ओके, सो प्लीज एनेबल आईपी राउटिंग इन स्विच. यस, बट या आई वांट, दैट वुड बी द इश्यू, वो नहीं किया मैंने आईपी राउटिंग. लेट्स चेक. यस, क्योंकि invalid traffic, I can see some invalid traffic here.
Okay, I will do that. 1 minute. I need to stop this first. It should work actually. Let me check my lag settings back. Show network lag interface lag. Okay, and I can see everything is proper. Okay, switch side ही देखना पड़ेगा अब तो. Show network lag run. Okay, so I believe this is also a proper count 0. Yeah, this is fine. Switch side ही करना पड़ेगा. मैं कर लेता हूँ. IP routing, right? Okay, ये stop है तब तक. Switch VPC पे एक बार try करते हैं. What is the status here? DNS is this. DHCP server is 16. This is my default gateway, by the way. Control Z. It's not taking. No, I don't think it. Yeah, it worked. Okay, thank you, Ketan. So next would be like, let me check the status. Show int brave. Show IP int brave. This is fine. Show Ether channel is fine. Interface is fine. If I make a ping again, 192.168.60 dot. Yeah, IP route is not there maybe. So I will let me just add it. So let me type one source port channel 1. I think I should able to ping this first. पहले ये ping होना चाहिए तो ही मैं. Okay, so config TIP routing. This should work. ठीक है, IP route डाल के देख लेते हैं. IP route में तो मैंने routes तो नहीं डाला है, but that could not be the issue. पहले तो point to point ही चलना चाहिए, right? So that should work. Show. Let me verify the. Yeah, routes is not required. Okay, so this is fine. Okay, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा lag configuration 0/0 0/1 पे है, alright. और यहाँ पे मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है 60.2. ओके, वहाँ पे मैंने 60.1 रखा है. और ये जो दो इंटरफेस है मेरे लैग इंटरफेसेस है, दैट इज शो थर्ड channel sub. Okay, so it's working. So it is in a layer 3. But the only thing is that I should be able to ping 60.2. Let me try something else from the firewall. Strange. Okay, let me just click on the lag interface. Okay, तो यहाँ पे 60.1 ही है. यहाँ से मैं switch configure कर पाऊँ. Switch safe यहाँ पे नहीं. And firewall might be dropping. So maybe here, let me just change to 2./3. So it is based on MAC address and the IP address. Might be the issue with the lag. Configuration तो ये इसमें तो और कुछ है नहीं. Switch में भी same ही है. Switch में भी कुछ नहीं है. जैसे कि इन What पालो about अल्टो the के clean अंदर. option you need to enable Hello? on lag?
in Palo Alto, we need to enable this ping option on the lag on the interface. 1 minute, Ketan, just give me one. ICMP ना? Yes, ICMP. Yes. 1 minute. Yes, Ketan. सर जैसे कि पालो अल्टो के अंदर इंटरफेस के अंदर पिंग का ऑप्शन अनेबल करना I'm पड़ता है so sorry. आईसीएमपी. Actually, thing is that I'm facing issue with some connectivity, voice connectivity. I'm not able to hear your voice. नो प्रॉब्लम. Hello, sir. Just give me a And sir, minute. Let me also just try. check port shut or not. No shut is unable on switch. I'm not able to hear you anything. I know you are speaking, both of you, but I'm not able to hear you guys. Voice. I think issue with my mic. Okay, let me try the another one. I have. Just wait. Just wait for a while. Can you hear me, guys? Can you speak up? Yes, we can hear you. Ketan. Hello, Ketan. Hello. બોલો બોલો બોલો. મને એવું લાગે છે કે આઈસીએમપી ચાલુ નથી અને જે પોર્ટ છે ને આ બનાવ્યો છે ને સ્વિચ સાઈડમાં એ સ્વિચ સાઈડમાં નો શટ મારેલું નથી કદાચ પોર્ટ ચેનલ ઉપર. ના પોર્ટ અપ છે બતાવે છે. પોર્ટ અપ પોર્ટ અપ છે. બતાવે છે? પોર્ટ અપ છે બધા. પરંતુ જે અચ્છા. પોર્ટ પર આઈસીએમપી અનેબલ કરવું જોઈએ. આઈસીએમપી ઓપ્શન હોવું જોઈએ અનેબલ નું. નહીં સ્વિચમાં પોર્ટ સ્વિચના અંદર નો શટ મારેલું છે આ પેલી પોર્ટ ચેનલ ઉપર ભરત સર. પોર્ટ અપ છે. પોર્ટ અપ નહીં હોય પેલું હશે લિંક અપ પેલી એ હશે શું કહેવાય લિંક અપ હશે. પોર્ટ અપ છે? પોર્ટ અપ બતાવે છે? થી પિંગ થાય છે તો પછી ફાયરવોલ થી સ્વિચ પિંગ થાય છે. સ્વિચ થી ફાયરવોલ પિંગ નથી થતું. સ્વિચથી ફાયરવોલ પિંગ નહીં થતું તો આ મતલબ એને એકચ્યુઅલી ઇન્ટરફેસ પર આઈસીએમપી અનેબલ નહીં હોય એટલા માટે. બરાબર છે. મને આ તો વન ટાઈપ ઓફ આ તો એ જ થયું ને આપણે શું કહેવાય ઇન્ટરવિલન જેવું જ થયું ને. ના ઇન્ટરવિલન નથી થયું. આ ઇન્ટરવિલન રાઉટિંગ એટલે I'm not તમારી પાસે able to સ્વિચમાં hear this. Just give me a minute. I know you are speaking. I can see, but wait for a while. रुको थोड़ी देर के लिए मैं एक बार अपना थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ.
हाँ हाँ कर लो सर कर लो। No, I have issue with the mic. Okay, so do one thing for me. Just put on the chat what you are saying. Okay. Meanwhile, let me check the switch. Okay, let me just ping it back. Okay, so let me do one thing. No worries, we will do one thing. We will continue it from tomorrow only. ICMP option need to be enabled on LAN interface. From what? Where? From the switch or from Sophos? आई थिंक सर फायरवॉल सोपोस। It is enabled already. Maybe yes, because it is a DMZ zone. You are correct. So what I will do, let me do one thing. And DMZ zone, I have not enabled ping. That could be the issue. So yes, configuration is already fine. So only thing is that the issue with the DMZ. Okay, so yes, let's see. उसको लैन कर देते हैं क्योंकि लैन में तो भी मेरा पिंग अलाउड है, डीएमजी में अलाउड नहीं है, उसके लिए वो ड्रॉप कर रहा है. करेक्ट, you are right. Okay, so let me just put this zone on. Let me enable ping on DMZ. Okay, so I think it is here. Edit कर लेते हैं. And yes, correct, Ketan. Okay, so now it will work. Okay, so it's done. Okay, so ping is not allowed from the firewall end. Great job. All right, so what I did, I have enabled ping on the DMZ zone here. Okay, so rest of the service also I have enabled. Okay, ping and HTTPS and enable. So on the switch side, the configuration is proper. On the Sophos side also, the configuration is proper, but about the bridge interface, let's see the bridge interface. We can do one thing on the bridge interface. Let me just go here. And what I will do, I will not configure the IP address. Okay, no IP routing, and click on save. Okay, update interface. Let's see. Okay, let it get saved. Okay, yeah. Okay, now let me try if I can configure interface, but this doesn't have the IP address. तो कैसे पता चलेगा अगर IP address ही नहीं है तो? Okay, so I think it should work. Let me just give the IP 192.168.90.1. Okay, let me just give the IP. Okay, update the interface, FNG and LAN. And on the switch side, it's switch 1. Yeah, this one. So FNGNF 0/T 0/2. Show run. Yeah. So trunk 0/2
and 0/3, and 0/1/1 is 1/20 on VLAN 20. It should take the default, it should be on the default VLAN. Everything is on default VLAN, so it should work. Okay, so let's try. Where is the issue? So this is the network, okay, and this is on the default VLAN. And just add the DHCP. VLAN बाद में add करते हैं. So it should get IP 90.1 range. Okay, let me refresh it. What happened to the firewall? It is reachable. Yeah. Okay, so let me just go to the interface. ओके, तो हमारा जो लैग वाला जो इशू था, ठीक है, लैग वाला इशू पता चल गया हमें. पिंग एनेबल नहीं था, हम पिंग कर रहे थे फावल से, वो ड्रॉप ही कर रहा था, राइट, ड्रॉप ले रहा था वो ऑलरेडी. So we should not get the drop. And yes, of course, on the DMZ zone, the ping was on not enable. The LAN zone पे enable था. Yes, so we have identified that issue. Okay, so lag is working. Lag अभी आपका proper चल रहा है, right? So यहाँ से अगर मैं ये भी start करूँ, right, तो यहाँ पे IP मिलना चाहिए. So if I go to interface, okay, and what we have on the interface, lag interface 60.1. ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं VLAN. ये तो डिफॉल्ट पे ही चल रहा है, तो इसमें चलना चाहिए. पॉइंट टू पॉइंट है तो शायद हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमने जो स्विच है वो L3 स्विच बनाया है. सो यस, ऑफ कोर्स, व्हाट वी कैन डू, we can just have, we can configure VLAN, let's say 19, we can say 97. okay, VLAN 97 configure करते एक बार, एंड 97. ओके, लैन पे रखते हैं, तो वो पिंग का इशू हमने यहाँ पे DMZ करना है तो DMZ कर सकते, इट्स फाइन, वो तो वैसे भी एनेबल ही है टेस्टिंग पर्पस के लिए. सो 97.1. ऑलराइट, सो दिस इज द VLAN टैग. ओके, सो VLAN डन. एंड जो लैग है उसके नीचे करना है. सो लैग तो डिफॉल्ट इधर सिलेक्टेड ही है. सो VLAN 97 क्रिएट करेंगे यहाँ पे. एंड जो स्विच है, राइट, उस पे हम, ओके, सो एक्चुअली क्रैश हो गया फाइल स्विच. Okay, so this could be the issue. No worries, we can fix that. Okay, तो VLAN यहाँ पे हो गया, तो DHCP कॉन्फ़िगर कर ही देते हैं साथों साथ. So if I go to add interface, okay, VLAN 97, interface select करो VLAN 97. So it's maybe here. Okay, VLAN 97. And 192.168.97.20 and 22, just keep 200, it's fine. और बस अभी के लिए तो इतना इनफ है. क्लिक ऑन सेव, एंड इफ यू कैन गो टू द स्विच. ओके, तो हमने यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर कर लिया है VLAN 97. ऑलराइट, सो प्लीज IP विल बी दिस, इंटरफेस इज दैट. ओके, ब्रिज भी देख लेते हैं, उसको भी फिक्स कर लेते हैं. So in bridge, sorry, in lag, we have DMZ. Yes, and we have point-to-point connectivity, ping हो रहा है firewall से switch. All right, and we have VLAN 97. तो अगर मैं यहाँ पे switch मेरा जो है, अगर मैंने इसका configuration लूज ना किया हो तो so I should क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे 0/2, वहाँ पे मैं VLAN 97 दे देता हूँ, राइट, एंड I can configure interface
डिफॉल्ट इंटरफेस क्रिएट एक VLAN 97 दूसरा क्रिएट करके उसको राउट दे सकते हैं. So let me just check that on the, okay, meanwhile, let me just scroll down and expand bridge interface. So bridge में F or G, LAN, okay, VLAN 20, okay, this is the LAN and the DSCP is running, I think. Okay, so on the switch 0 1/1, okay, तो ये मेरा यहाँ से होगा. So 1/1 is on VLAN 20. Okay, so VLAN है 20, yes. And if I go to this PC, okay, so let me just try to add IP manually. एक बार manually डाल के देखता हूँ इसमें क्या है fix करने के लिए. IP 192.172.1620.30 255.255.255.0 gateway है 172.16.20.60. Okay, let's see. Address cannot be changed. Checking for duplicate address. It is already used by the MAC address. This. Okay. What I will do, I will go to firewall and I will not run DSCP. Let's say if firewall is causing the issue, no worries. What I will do, I will delete it. Okay, I will delete the DSCP. Okay. Now let me just try if I can give the IP address. So I don't know why it is not taking, because it is already being used by MAC address. This, okay, it is already MAC use. Address cannot be changed. Okay, let me just restart it, check it back. Yeah, now we can see the packet capture, right? So let's see packet capture. If I type TCP dump, if I check the TCP dump back, Sophos 1965 and option number 4 and TCP dump first with the lag 192.168.60.1 and proto ICMP. Okay, so we will come to know what is happening. So I don't believe that switch is ready. Show IP in brief. Okay, so the configuration has been moved. No worries. Interface port channel 1, no switch port, IP address 192.168.60.2.255.255.255.0. Okay, so it's done. And interface range gig 10/0/1, no switch port, no IP address, and channel group 1 mode on. Okay, so this is done. Now show Control Shift, I think Z or 6. This is not working. Yeah. So if I ping 192.168.60.1, it should work. Okay, so let me try some more packets, 100, and go to packet capture. Okay, so now I can see in and out packets, right? तो पैकेट हमारा जो है वो पहले इन आ रहा है, ओके, पोर्ट ई से इन आ रहा है, ओके, लेग से आएगा, ऑलराइट. सो हियर इट इज. सो जो पैकेट है पहले इन आएगा, देन
जो आपका पोर्ट ई है उससे इन आएगा, या फिर लोड बैलेंस होगा उस हिसाब से पोर्ट ई या डी से इन आएगा, एंड देन वो रिप्लाई पैकेट भेजेगा आउट. Okay, so this is the reply packet, and that is the request packet, and again it will send out of the lag. So in, then we have lag के अंदर जो हमारा पोर्ट होगा उसके अंदर पैकेट इन आएगा. ऑलराइट, ICMP रिक्वेस्ट, so you can see these two packets, ये वाला. Then the reply will come back, and the port D load balance करेगा, आउट भेजेगा. ओके, और फिर वो लैग को भेजेगा और वो आउट हो जाएगा पैकेट. ऑलराइट, सो व्हाट वाज द इशू? पिंग, अगर पिंग एनेबल नहीं है, ओके, फायरवॉल कैसे हैंडल करेगा? यू हैव टू सी दैट. ऑलराइट, एंड दिस इज द वर्किंग लॉग्स. ओके, वर्किंग पैकेट कैप्चर्स. अभी हम फिक्स करेंगे ब्रिज. ओके, ब्रिज करते हैं. ओके, लैग तो हमारा हो गया. ओके, सो इट्स वर्किंग नाउ. रेस्ट VLAN कॉन्फ़िगर करना है, आईपी राउटिंग डाल दो या फिर स्टैटिक राउटिंग डालना है, या फिर वो चलेगा. ऑलराइट, सम टाइम यस, वी हैव टू लुक वेयर इज द इशू. So let me save this for tomorrow. We will configure VLAN under this, and okay, let's configure one VLAN. एक VLAN इधर ही configure कर देते हैं. So if I go to config interface VLAN, okay, let's say 97, right? And IP address I can give 192.168.97.10. Okay, that is fine. 255.255.255.0, and yeah, of course it's fine. Now let's check if I can ping the VLAN. IP routing is required, right? So routing, static routing दे देते हैं. So IP config T IP route 0/0/. okay, सारा static ही दे देते हैं. अभी मेरा गेटवे होगा 192.168.60. .firewall IP1, right? And let's keep and show running. Let's see if I can ping 8.8.8. Okay, so let's check switch settings. So I think IP routing में डाला इसमें. Okay, I know I don't believe IP routing. Okay, so IP routing is required. Okay. हाँ, या इंटरफेस पे डालना पड़ेगा. यस यस. सो चलो इंटरफेस पे डाल देते हैं. 0/2. ओके, 0/2 पे डाल देते हैं. सो config T interface 0/2 switch mode access VLAN 97. Okay, so let's check the status. Show IP int brief. Okay, so I can see VLAN is still down. Okay, so IP VLAN, no worries. No shut, कोई बात नहीं, no shut भी कर देते हैं. It should work actually, right? No worries. So config T interface VLAN 97. Okay, so okay, वो ऑटोमेटिक अप हो जाएगा, वो हो गया. Okay, मैंने तो नो शट नहीं किया. Okay, let me just verify show IP int brief. Okay, तो अभी अब हो गया, right? नो शट के भी नहीं हो गया क्योंकि मैंने उसको असाइन किया, तो आई थिंक थोड़ा टाइम ले रहा है. वी हैव टू बी वेरी पेशेंट ऑन वर्चुअल. ओके, so let me check ping is working. Okay, so I can see ping is not working. Okay, ping तो चलना चाहिए. So I think that is the firewall issue. Yeah, firewall का issue है because you configure port as 0 spanning tree. अच्छा, okay, हाँ, yeah. No worries, we will see that in the switch configuration. So we should able to ping 8.8.8. So if I go to firewall, okay, and let me check diagnostic.
डीएमजी था जोन, तो डीएमजी तो हाँ रूल नहीं होगा ना उसमें, शायद रूल नहीं है। ओके रूल क्रिएट करते हैं, फावल रूल डीएमजी टू वैन। ओके तो इंटरनेट दे देते हैं, इंटरनेट से पहले ओके लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। ओके तो अप आ गया, सो यहाँ से मुझे आईपी मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज द गेटवे नाउ। तो यहाँ पे डीएचसीपी रन कर सकता हूँ या फिर मैं उसको रिले करा सकता हूँ। I can relay the DHCP, I should get the IP. Okay, so if I go to the VPC, this is the VPC. And let's configure IP 192.168.97.100.255.255.255.0 192.168.97. I think it is switch का दे दें 10. Okay, so I think it will take 10. You can see the screen, yeah. Okay, now let's do one thing. Ping 192.168.97.10. Okay, that is reachable. Now, if I ping 8.8.8, it will not work because वो firewall rule नहीं है वहाँ पे. But let me check with other 192.168.68.60 डॉट जो पहले स्विच है तो वो तो होगा और फायरवॉल पे है वो है, वो भी होना चाहिए. Okay, so it's not there. So IP routing मैंने शायद डाला है उसमें. If I go to switch, okay crash हो गया. Okay. Okay, no worries. ये जो switch है ना वो crash हो गया है, उसकी वजह से issue आ रहा है. Actually कॉन्फ़िगरेशन ही हमारी प्रॉपर ही है एक जगह को छोड़ के, क्योंकि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे. यस ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज दैट इट इज गेटिंग क्रैश, तो इसकी वजह से ओके नो वरीज. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रैप अप द सेशन फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो. वापिस ब्रिज ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, राइट. ब्रिज भी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड LSCP and this might work, all right. And we will configure the rule and उसको हम यहाँ पे इंटरनेट देंगे DMZ zone पे, all right. So this is this, हम ये वाला सेटिंग कर रहे हैं अभी. So here we have bridge and यहाँ पे LSCP, all right. And also we will configure the switch as L3 and we will route VLANs here. Okay, यहाँ पे तो VLAN यहाँ पे ही करेंगे, यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, right. यहाँ पे क्यों जरूरत है फिर, मैंने तो यहाँ पे लैग के नीचे VLAN कॉन्फ़िगर किया हुआ है. I don't believe that is required here, but in bridge it can be. But we'll see the working, all right. Let's see. We will see, we will test everything one by one. All right, anyone has any doubt till here, guys? थोड़ा सेशन लंबा हो गया है, all right. But tomorrow also we might have a long session, so okay. All right, we will continue tomorrow. Tomorrow we'll configure DMZ and internet also. Internet भी दे देते हैं. Okay, sir. No issue. Okay, yeah, sure. I will do it and I will fix all the issues which we have faced today, all right. तो ऐसे तो हम fix करेंगे सब कुछ, right. We will fix everything, we'll make it work, we will understand and कैसे firewall, we will check that drop again. कि ping हमने enable नहीं किया तो drop तो मिल ही रहा था, right. जैसे मैंने बताया था अगर firewall drop कर रहा है तो logs आएंगे and then we have to identify that issue. So we will check with the log viewer later on. अभी उस पे आ नहीं रहे, उसकी वजह से हम थोड़ा सा, yes, might be there also issue from the switch also, so we will check that switch में issue होगा. Maybe configuration यहाँ पे जो हमारा ब्रिज काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो तो प्रॉपर ही है, नो वरीज. हम एक बार रिकॉन्फ़िगर करेंगे तो हो जाएगा, जनरली हो ही जाता है. अगर नहीं होता तो दूसरी बार करते तो हो जाता है. ओके, बिकॉज द सेटिंग्स एंड स्टेप्स आर सेम. ओके, हो सकता है कंफ्यूजन में कुछ और एनेबल डिसेबल कर दिया,
उसके बाद तो हो सकता है यस, बट बेसिक स्टेप्स तो हमारे यही है. Alright, so no worries. Let's stop the session for today, guys. Okay, sir. Anyone apart? Yes, Ritesh, I will put everything. Okay, I show your question. Anyone has any doubt and query? कुछ doubt query है? From my side, no, sir. Okay, and I heard in between we will speak in Hindi because rest of the students are from different part of the world, different part of the country, so we have to speak in Hindi. Okay, so whatever we are discussing, guys, if we are sharing the knowledge, make sure we speak in Hindi, okay, or in English. That would be great. Okay, so let's join tomorrow, guys. Try to practice the lab and let's join and continue tomorrow. All right, thank you, guys. Thank you for listening. Bye, take care. Good night. Good night. Bye bye.